कॅप्टन शिवली आणि कॅप्टन शिरोडा आता टॉसा घ्या दोघी जण इंग्लिश घेऊन. कॅप्टन शिवली आणि कॅप्टन शिरोडा अच्छे टॉसा घ्या.
दोन्ही टीमेचो 12th मॅन मातसो या कॉमेंट्री बॉक्सान. शिरोडान शिवोले दोन्ही टीमेचो 12th मॅन मातसो कॉमेंट्री बॉक्सान या. एक्स्ट्रा प्लेयर मातसो या दोन्ही टीमीचो. Toss won by Shiolim and opted to field first. Prakash to bowl the first over. Sumesh. Oh, left alone. Good start. Right on the money. Both teams extra player come in the commentary box, please. Oh, lovely shot. Fielder coming underneath. And a dismissal early. Somesh departs without troubling the scorer. I would like to thank all the sponsors: Autotech boss Yatin Parekh, Karan Parekh, Uday Madkekar, Rohit Monserrat, Biryani and more, Tony, Sky Motors, Noberts, Sunrise Foods, Bharat Electricals, Mr. Danish, Bhumiputra, Shetty Enterprises, Sargagar Ply and Paints, Sargagar Shoes, F-Hotel by Sayaji, Sazawat, Priyesh Properties, Hyder Ali 36. Thanks to one and all for your valuable contribution in making this tournament a big success. None for one, and the new man in Amir Gadekar. Looking to slog the ball very early, gets off the mark with a single. Drives the ball up pitch and just turning away from the fielder. Both the batters off the mark now, 2 for 1. Shiolim, extra player Shiolim. Oh, taken on the full and swept away. And first 6 of the innings. 2 singles and then a 6, score 8 for 1 after the end of first over. The next match being played between Arpo and Karem, requesting both the teams to
Kindly submit the playing list. One over, 8 for 1. Pushparaj to bowl the second over. Taken on the full, and this time 6 to begin the over. 15. For 1. Next match played between Arpo and Suare. Both the captains come with your playing list. Oh, the ball hurrying onto the batter on this occasion. Picks up a single. Yesterday the two teams, Shiolim and Nasir, entering the semi-finals. The first session, Team Shiroda, Team Shiolim, Team Arpo, Team Suare, Team Param and Team Navim. Let us say which team from these 6 qualify for the semi-final in the first session. Right up in the block hole. What a delivery here from Pushparaj. The two umpires, Mohsin Sheikh and Punya Palkar, beginning the day 2. Goes upish. They have filled the patrolling the deep point region, and just a single. Good throw. Very sharp throw here from the outfield. For 1. Should be a dot. Amir looking to switch it. Shuffling way outside the off stump. Dot delivery to mark the end of the over. So 2 sixes coming off the over. It's 17 for 1. बॉस से सब फाइन ऑटोटेक बॉस चले बॉस कार बने सुपरस्टार फुल फैन सब कुछ मिले खाई ब्रांड ऑटोटेक चले बॉस ड्राइव में आए मस्ती का sauce फोन को रखूं होल्डर में चार्जिंग चले फोल्डर में एलईडी लाइट वाइपर स्मार्ट बॉस एक्स प्रकाश down the ground, long on, single. Score moves on to 18. Third over, 18 for 1. Short and wide being signaled. That single takes a score on to 19. The lost wicket of the very second ball, but then a partnership between Amir Gadekar and Saish.
Stepping down the crease this time, Amir is looking to improvise, but is not able to execute his plans. Single in the long on. Score moves on to 20. Switch it in the gap. Will go for a boundary. 22. 24 in fact. Looking to hike the ball in the long leg region. Beaten this time by the bowler. Again looking for that switch hit. Should be a single this time. 25. That mark, in fact, leg by signal from the umpire to end the over. 3 overs. 25 for 1. 12 balls remaining. Requesting the captain of Arpo, to please submit your playing list, and captain kindly come for the toss. Team Arpo. Second call for Team Arpo. Bowler's name. Change of pace. And just a single to take the score on to 26. Score 27. Full toss and gets hold of this one, dispatches it for another 6. 33. Oh, good shot. And this time again finding the fence on the full. Back-to-back sixes. 39. Looking to accelerate in the last couple of overs now. They were very disciplined in the first 3 overs, conceding only 25 runs. 2 sixes in last 2 deliveries. Oh, missed time shot. And taken.
Newman in Swayam. Shot again hooked, mistimed. A good running catch. Had to cover a lot of ground. Consecutive wickets we have seen. Hat trick taken yesterday. Already we have seen a wicket hat trick been taken yesterday. Samir Gadi and the new man to face the hat trick delivery. दोन्ही टिमींग हांगा वेवस्था केल्ली आसा ऑर्गनायझरांनी रेफ्रिजरेटर दवरलेलो आसा आनी तितून उदकाच्यो बाटल्यो दवरल्या. हो टुर्नामेंट घडोवन हाडटा ऑटोटॅक पॅन्जिम क्रिकेटर्स आनी पयल्याच फावटी अशे आयोजक मेळिल्ले आसा आमकां तेंच्यांनी खंयच्याच टिमी कडल्यान एंट्री फी नासतना 1 लाखाचें बक्षीस दवरलेलें आसा विजेत्यांक आनी 50,000 उपविजेत्यांक तशेंच दिग्गज अशो ट्रॉफीज. Top edge, oh missed and will be a boundary. So hat trick ball going for a boundary. इतलेच न्ही जाल्यार प्रत्येक मॅचीक जो प्लेयर ऑफ द मॅच आसतलो तेका एक फास्ट ट्रॅकाची रिस्ट वॉच सुद्दां दवरलेली आसा. इतले सगळे तेंच्यांनी विदाउट एनी एंट्री फी अशें तुमकां थोडेच ऑर्गनायझर मेळटले. मागीर पयले फावट अशें तुमकां ऑर्गनायझर मेळ्ळे आसतले जेंच्यांनी खंयच्याच टिमी कडल्यान एंट्री फी घेवंक ना आनी 1 लाखाचें बक्षीस दवरलेलें आसा विजेत्यांक आनी 50,000 उपविजेत्यांक आनी मॅन ऑफ द मॅच रिस्ट वॉच. Score 43 for the loss of 4 wickets last over. गरमेचे दीस आमी पळयता तापमान वाडत आसा आनी प्लेयर्सांक कसले त्रास जावचे न्ही म्हणून हांगा रेफ्रिजरेटर सुद्दां दवरलेलो आसा जेणे करून तुमकां थंड उदकाची वेवस्था सुद्दां तेंच्यांनी उपलब्ध करून दिल्ली आसा. हांगा 2 डगआउट आसा नसीर बेग डगआउट आनी दिनेश नायक डगआउट. मागता टीम आडपय हेंच्यांनी बेगीन आपली टीम लिस्ट दिवची आनी टॉसाक येवचो. लास्ट कॉल लास्ट ओवर. Single picked up. 2 is the call. Amir comes home safely. Bowler's name 45. Last call for team Arpo. फुडले जर 5 मिनटां भितर आडपयचो कॅप्टन पावना जाल्यार टॉस 6व्या रेमाक वयतलो. Dot delivery. This is the final over. Can they go past 55? Because we have seen a total of 60 also being chased. Shuffling too much. Another dot delivery. He's eyeing that onside boundary. He's looking to play with the breeze. Or down the ground and into the gap. Will be a boundary here. Score moves on to 49. Last 2 deliveries. Oh, good shot. This will fetch him half a dozen. Dragging the ball from outside the off stump, Amir. This will ease off the pressure on him. A couple of dot balls. Then a couple now. A 6. 55.
on the onside, and should be a catch. Good catch. The fielding has been superb. They haven't dropped a single catch. That marks the end of the innings. 56 to win for team Shiolim and move into the next round. The team playing this match has an advantage. They get one match bye. Next match coming up between team Arpo and team Suare. Requesting both the captains to kindly come for the toss. I would like to thank all our well-wishers, our supporters, our sponsors. Autotech boss Yatin Parekh, Karan Parekh, Uday Madkekar, Rohit Monserrat, Biryani and more, Tony, Sky Motors, Noberts, Sunrise Foods, Bharat Electricals, Mr. Danish. 56 to win. Bhumiputra, Shetty Enterprise, Salgaonkar Ply and Paint, Salgaonkar Shoes, F Hotel by Sayaji, Sazawat, Priyesh Properties, Haidar Ali 36. Shiolim won the toss, elected to field and restricted Shiroda to 55. Now being set a target of 56 to win the match. The Shiolim constituency team, which reached the final of CM Trophy the very first season, played against a Madkai constituency, in which Madkai constituency won the finals. Subrat, who got the player of the series, Royal Enfield Bullet. Was a big loss. His sad demise, Subrat. Team Arpo and team Suare, captains, please come for the toss with the playing list. Pushparaj and Akshay, the two openers. As you can see, Manuel Pereira is busy with his camera capturing all the moments in his lenses. We have the captain of team Suare, so requesting the captain of Arpo to please come with your playing list for the toss. Starts off with a single, requesting Paresh Bandekar to kindly flip the coin of this second match toss between team Suare and team Arpo. Switch it attempted again, another single.
Short ball and the bat slipping out of his grip. 2 singles and a dot. Captain of Team Arpo, kindly come for the toss with your playing list. Slower ball, doesn't get hold of it but will find a single. So runs coming in singles in the mandatory power play over. Dot delivery, very good over. So far just 3 singles. Very disciplined bowling here from Amir Gadekar, the trump card of Shiroda. Down the leg side and wide, called by the umpire. That extra takes the score to 4. No timing, find a cover fielder, just a single, 5 runs. End of the over, it's 5 without loss. Last call for Team Arpo. Team Arpo captain, last call for the toss. Captain फुडल्या 2 मिनटां भितर पावना जाल्यार टॉस 6 वेळाक वयतलो. मातशें बेगीन करा, उदोच्यान वारंवार आमी आपयता तुमकां. फुडल्या 2 मिनटां भितर जर आडपयचो कॅप्टन पावना जाल्यार टॉस 6 वेळाक दिलो गेलो वयतलो. Ashish bowling the second over. Short and wide. Warm welcome to Ramesh Naidu on behalf of Autotech Panjim cricketers. Oh, solid shot here. Full Monty. Over the long leg. 11 runs. 12 in fact. This time looking to hit through the covers and catch taken. Captain Team Arpo. Arpo captain, तुमची टीम लिस्ट घेऊन या. टॉसा घेतले त्यांना आणि जर तुम्ही फुडल्या 2 मिनटां भितर पावना जाल्यार टॉस आमी दिता 6 वेळाक. 1 मिनिट ऑलरेडी जाल्ले आसा. Batsman. कैप्टन टॉसा क्यों कैप्टन?
not delivery. Suare won the toss, opted to field. Shot, looking to hook the ball, not getting on top of the bounce, and misfield allows a couple of runs. Score 18. Bowler's name. Short ball pulled and straight into the hands of the fielder, who puts it down. Bowler's name. Cuts it and cuts it for a couple. Scored 21. Oh, well bowled, fuller length this time, right up in the block hole. Long off, one bounce. And a couple more. 23, 24 in fact. End of the over. 24. Bowler's name. Vishwajit.
Shot pulled and against the wind. That is why not able to clear this fence. Hitting against the direction of wind breeze. Just a single. Couple of runs more, 33. Shot again, making room on the onside, pulling the ball, but the fielder very well placed. Looking for the second. Might be a run out here. Yes, the finger has been raised. So just one run added. Last, in fact, couple of balls to go in the over. Not ball, so last ball of the over. Just 34. 22 runs required of 7 balls. And now the dot delivery to end the over. So 22 runs required of the final over. Thanks to all the sponsors, Autotech boss, Yatin Parekh, Karan Parekh, Uday Madkekar, Rohit Monsarat, Biryani and more, Tony, Sky Motors, Nobuts, Sunrise Foods, Bharat Electricals, Mr. Danish, Bhumi Putra, Shetty Enterprises, Salgaonkar Ply and Paint, Salgaonkar Shoes, F-Hotel by Sayaji, Sajawat, Priyesh Properties, Hyder Ali 36. You are witnessing the Autotech Panjim Cricketers Heavy Ball Cricket Tournament, Panchayat Municipality level invited teams, with the team being invited without any entry fee for the teams, and the cash prize worth rupees 1 lakh for the winners and 50,000 and trophy for the runners up. Also the player of the match every match. Samir to bowl the final over. Player of the match every match. A fast track wrist watch. Picks up a single. 21 required. Misses the throw. Scored 21 required from 5 balls. Our top edge and another dismissal. So the team just losing the momentum and finding themselves on the back foot. It's very tough for them to go from here to chase the total. Batsman. Batsman. Prahlad. Another dot. Prahlad
It's a dot delivery. Top in the fielder running and not judging the ball. Will pick up a single. Won't make any damage because the batting team not in control. They are far away from the target. Full toss. Goes over the mid-off. And good effort. But I think it's a boundary. No. Just a single. Next match toss has been done. Savaveram have won the toss. And they have opted to bowl for full toss ball. That marks the end of the match and comprehensive win here for Shiroda. I would like to thank Shiolim for being a part of this tournament. And I request team Savaveram to kindly take the dugout. Nasir Beig dugout and team Arpo to kindly take the Dinesh Naik dugout. Toss won by Savaveram and they have opted to field first. So I request Savaveram to take the field quickly and openers of Arpo to come at the crease. Autotech Panjim cricketers, players of the match. Player of the match goes to Amir Gadekar. Paging Raja. I request Ramesh to kindly do the honors to present the player of the match. Amir Gadekar. Amir Matsuyozo, player of the match, Gyopak. मागता ओपनर्स टीम आडपय मातशे ओपनर्स येवचे बेगीन. Congratulations, Amir, receiving the player of the match from the hands of another cricket enthusiast, Ramesh Naidu. Amir, congratulations. बरी मॅच झाली. आम्ही खूप फावटी पळयता टुर्नामेंट जाता लाखाचे जाता 2 लाखाचे 5 लाखाचे जाता एंट्री फी आसता पूण एक असो टुर्नामेंट जेका एंट्री फी ऑर्गनायझरांनी धरून जो खास आमचे क्रिकेट प्रेमी क्रिकेट मोगी जे आसले नसीर बेग आणि आमचो स्टार ऑलराउंडर प्लेयर दिनेश नायक यांच्या स्मरणार्थ हो टुर्नामेंट आयोजन केला. कितें सांगपाक सोदता तूं ह्या आयोजना बद्दल एक वेगळेच अशें आयोजन हांगा घडोवन हाडटा तें. हांव पयलू साहिलाल थँक्यू म्हणटा कित्याक आमकां तेणी खेळपाक चान्स दिलो म्हणून आनी ऑटोटॅक पेंजीम हेणी हो बरो टुर्नामेंट केल्लो आसा. एंट्री खंयचेच टिमीक ना आनी हांव सगळ्यांले देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू अमीर, ऑल द बेस्ट तुका फुडले मॅचीक. I request Taufik to kindly present a token of love to our guest Ramesh Naidu.
हे जे फुडली मॅच जातली ती पारसेम विरुद्ध नावेलीम. मागता दोन्ही टिमींनी आपली प्लेइंग लिस्ट सबमिट करची. टीम नावेलीम आणि टीम पारसेम मातशे या तुमची प्लेइंग लिस्ट बरया आणि कॅप्टन जर्सी घालून मागीर टॉसा घ्या. जर 12th मॅन आसा जाल्यार मातसो कॉमेंट्री बॉक्सान धाडचो दोन्ही टिमींनी. दिप्तेश टू बॉल द फर्स्ट ओवर. शॉर्ट फोल्ड आडपय. तुमचे दोनूच प्लेयर ते खेळटा. मातशे कोणी तरी एक्स्ट्रा जर 11 येयले जाल्यार कोणे एकट्यान येवचो. जो 11वा बॅटिंगेक वयतलो तेणें मातसो येवचो आनी आमकां नांवां सांगची. 12th मॅन आसा जाल्यार येवचो मातसो. सोमेश्वर ऑन स्ट्राइक. Picks up a quick single. मातसो एक्स्ट्रा प्लेयर टीम आडपय. 12 प्लेयर येयल्या तुमी. 12 मातसो येवचो हांगा. दोन डगआउट. नसीर बेग डगआउट आणि दिनेश नायक डगआउट. तसोच रेफ्रिजरेटर दोन्ही टिमीं खातीर थंड उदकाची वेवस्था केल्ली आसा. बॅट्समॅन्स नेम प्लीज. अजय. गुड शॉट and get catch put down and a single taken. Score 13. Ajay looking to cut the ball through the offside, underage, and Yogiraj Amber. Amber to bowl the second over. Vijay replacing Someshwar. Oh, gets past the wicket keeper. Getting off the mark with the boundary as the score moves on to 19. Over pitch delivery driven down the ground, long on fielder. Collecting and throwing the ball. Meanwhile, a single being taken. Amagta team Parsem
येवचे आनी हांगा प्लेइंग लिस्ट आमकां बरोवन सबमीट करची बेगीन. टीम पार्सेम आनी तुमची जर्सी कलेक्ट करची. Ajay looking for a switch hit. Dot delivery. On a bounce to the bowler. End of 2 overs. Score moves on to 21. Thank you, DJ. Saniket. Saniket 21 for 1 after 2 overs. Up in the air. And catch taken. So both openers now back in the dugout. Thank you. Among the team Parsem. मातसो येवचो हांगा कोण तुमचो कॅप्टन हांगा प्लेइंग लिस्ट आमकां बरोवन दिवची आनी तुमच्यो जर्सी कलेक्ट करच्यो. पार्सेम कॅप्टन. Navim Vignesh. Oh, pitch delivery into the backward point. Single. 22. कॅप्टन पार्सेम आम्ही वारंवार कॉल करीत आसा. तुम्ही येवची तुमची प्लेइंग लिस्ट दिवची आणि जर्सी घालून कॅप्टनान रेडी रावचे टॉसाक. 5 मिनटाची आमी वाट पळयतले नाल्यार टॉस आमी नावेलिमाक दितले. Scored 23 and a dot.
Score 27. Up in the air and finds the long on fielder. Another wicket down. Wide being declared. Chandan Naik. I still remember it. United Ponjaga Trophy. He had a great performance on this very ground. This time bouncing over the fielder. 32. Lose another wicket. Thank you, DJ. Late Shri Vasudev Sani Smriti Chashak 8, 9, 10 May. All India double wicket tournament day and night. Not delivery. Oh, another dot. They are finding it difficult. Got off to a good start. First over 15, but now the score has been anchored on 32. Leading edge has to be taken and has been taken by the wicket keeper. So Chandan picks up another wicket. Winners of rupees 1 lakh and runners of 50,000. New batter. Vaibhav. Shot. Again looking to pull the ball. This time Yatin in the fine leg region. Single.
Score 33. Last over 33. Thanks to all the sponsors: Autotech Boss, Yatin Parekh, Karan Parekh, Uday Madkekar, Rohit Monsarat, Biryani and More, Tony, Sky Motors, Nobuds, Sunrise Foods, Bharat Electricals, Mr. Danish, Bhumiputra, JT Enterprise, Sargaukar Ply and Paint, Sargaukar Shoes. Bowler's name? Into the long leg and straight into the hands of the fielder. Score 33. Utkarsh bowling the final over. Thanks to F Hotel by Sayaji, Sazawat, Priyesh Properties and Hyder Ali 36. Vallabh, the new batter, requesting captain of Parsem to kindly come for the toss with the playing list. Parsem captain. Shot, flat batted, and should be a couple. Might be a run out. I think he has made it. Good running, 3 runs taken. Score 36. This is the last over. Lack of runs for Arpo team, left alone, left by the wicket keeper also. So no ball being called and 2 runs being added. 38. So the follow-up delivery will be a free hit. Good presence of mind by audio boss as well. Slower ball this time. Ballooned up in the air and catch has been put down. Wouldn't have made any difference. And another couple. Score 40. Three balls to go. 40. And a single to take the score into 41. Swing and a miss. So final delivery of the innings coming up with score 40. Below power score for Arpo. And the finish of the innings with a 6. The strong batting lineup for Team Survivorem. Top edge again. Wicket keeper makes no mistake. So 41 is the target for Team Survivorem. Last call for the captain of Team Parsem. तर पार्सेचो कॅप्टन फुडल्या 2 मिनटां भितर टॉसाक येना जाल्यार टॉस नाविलीम अप वयतलो. 42 इज द टार्गेट. Score 41, 42 is the target.
captain, both the captains, please come for the toss. You can see the drone work by Ridham Haldankar. Chandan, and along with Chandan we have Rushikesh. Chandan likes this ground. He has scored ample of runs. De Danadan Chandan. Left arm bowler, short ball and hooked away. Gets off the mark with a boundary. Getting into position very early. It was short ball, had ample of time to go on the back foot and hook the ball for a boundary. One bounce into the fence. Sham bowling the first over and being welcomed with a boundary. Chasing only 42. Captain Navim and Parsem. Last and final call. This time over the mid-on. And result is the same. रोहित पावले तुझी बाईक माझी त्यांची काढची. रोहित पावले बाईकी भितर अलाउड ना. नाविलीम आणि पारसे कॅप्टन दोन्ही टॉसा घ्या. Shot by Chandan. Goes a very long distance. 4-4-6. 14 runs on the scorecard. Looking to drag the ball from outside the off stump, fetch it.
Tail is the call from Parsem. It is the result. Navim won the toss and they have opted to bowl first. Score 20. 2-6, 2 boundaries. Full length. Will pick up a single misfield by the fielder. 21 runs of the very first over. Another 21 runs required. DJ to bowl the second over. Ajay. And it will be Chandan on strike. 21 runs from the first over. Full toss. Oh, Chandan, how could he miss that? Was for a single. Rushikesh facing his first delivery of the tournament. Requesting Parsem and Navim kindly select the match ball. Parsem and Shiolim kindly select the match ball. Oh, shot, Rushikesh. He was enjoying the fireworks from the non-striker's end. Now he joins the party. Thank you, DJ. Nasir Beig, one of the great cricket enthusiasts. Wherever there was tournament being played, he used to visit along with his group. Hassan was his closest friend. Lovely shot again by Rushikesh. I still remember in 2014 he organized the floodlight cricket tournament on Panjim Gymkhana ground. At that time, organizing floodlight cricket tournament at one of the most prestigious ground, and then very next year on this very ground another floodlight tournament where the player of the tournament was an LED TV. It was taken by Apali Kalangutkar. A lovely shot. 3 sixes in a row. They are almost in a hurry. Only 2 runs required. Might be the fastest run chase of the tournament. In the last match, in fact yesterday, the match finishing in 2.3 overs. Dot delivery. Chance of a wicket and taken.
Thank you, DJ. Name and number. I request Parsem, Team Parsem, मातसो तुमचो मॅच बॉल सिलेक्ट करचो बेगीन. Chandan finishing the match. Match finishing in 2.1 overs. Thank you. Thank you, DJ. The first goal to receive a television for a big tournament. I request our guest Umesh Asgaonkar to kindly present the player of the match, and I request Chandan Naik, Dhanadhan Chandan, to kindly come and receive the player of the match. Thank you, Team Arpo, for being a part of this tournament. I request Bhau to present the player of the match to Chandan. We have the Autotech Panjim cricketers player of the match with us, Chandan. चंदन आमकां खबर आसा हो ग्राउंड तुका सामको लकी तुजो फेवरेट ग्राउंड. ह्या ग्राउंडार तुवें कितलेशेच रन काडल्या. तूं ह्या टुर्नामेंटाच्या बद्दल कितें सांगूं शकता. हो टुर्नामेंट आयोजीत केला आसा नसीर बेग आनी दिनेश नायक यांच्या स्मरणार्थ. असो टुर्नामेंटाक खंय एंट्री फी घेवंक ना. 1 लाखाचें बक्षीस, विनर्सांक रनर्सां 50,000 ट्रॉफी, एवरी मॅन ऑफ द मॅच, एक रिस्ट वॉच फास्ट ट्रॅकाची. कितें सांगपाक सोदता तूं ह्या आयोजना बद्दल. सांगपाचें म्हटल्यार आयोजन चड बरें आसा आनी फ्री एंट्री म्हणटकीर खंयच जायना. फ्री एंट्री आसतकीर कशें आसा प्लेयरांकूय अशी सगळें म्हणटा आमकां एंट्री करपाक हांगा मेळना, जायना. थोडे टिमीक ते टिमीक चान्स पडटा पळय खेळपाक. आतां आमकां कशें आमकां हांगा खूब लक आसा सावयवेरेंच्यान, तुमकां सगळ्यांक खबर आहा. आनी हांव ऑटोटॅक पेंजीम तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता की सगळ्यांक आमकां आफोवन हांगा फ्री एंट्री घेवन बरो टुर्नामेंट ऑर्गनायज केलो. Thank you, Chandan, for your entertaining knock. That was Chandan Naik, one of the most humble cricketer you will ever get.
Openers, thank you DJ. Openers, Team Parsem. We have a few biker men playing this tournament. Yesterday, Rohit Paule, who got the player of the tournament bike at Morje last year. And now there is Samarth Gavas, who got player of the tournament at Sangye Premier League, the Aprila bike. And the newly joined Sahil Arolkar, who was awarded the Yamaha FZ player of the tournament bike at Amdar Chashak 2026, organized by Honorable MLA of Manrem Jeet Arolkar. Imran Mullah, another player of the tournament who got a bike at Murjim, played yesterday here, and their team are into the semi-finals. I request openers to kindly come at the crease. Team Parsem openers. नावेली तुमचो 12th मॅन धाडचो, तशेंच पार्सेम तुमचो 12th मॅन धाडचो. आमकां यूट्यूबाचेर ही हो टुर्नामेंट लायव्ह कवर जाता आनी प्रत्येक प्लेयराचें नांव यूट्यूबार येवचें गरजेचें आसा. सो हांव मागता तुमचो सहभाग आमकां लाभतलो आनी तसोच तुमी आमकां सहभागूय करची गरज आसा. प्रत्येक प्लेयराचें नांव आमकां जाणून घेवपाची गरज आसा. मागता दोनी टिमीचे एक्स्ट्रा प्लेयर कॉमेंट्री बॉक्सा कडेन येवचे. जर 11 प्लेयर आसा जाल्यार बॅटींग टिमीचो 11वो बॅट्समॅन जो बॅटिंगेक वयतलो तेणें हांगा येवचें आनी आमकां नांवां सांगची. जे आमचे डगआउट्स आसा, नसीर बेग डगआउट आणि दिनेश नायक डगआउट, थंय तुमच्या दोन्ही डगआउटा मदीं एक डबल डोर फ्रीज दवरलेलो आसा. तो फ्रीज आमी प्लेयर्सांक थंड उदकाची बाटल्यो थंय तितून दवरलेल्यो आसा. तो प्लेयर कोणाक जर उदकाची गरज जाय जाल्यार तेंच्यांनी ते फ्रिजांतल्यान उदक घेवचें. अविनाश गावस to bowl the first over. Sahil Arolkar, the biker man, latest addition. Plays down the ground in the mid-on, gets off the mark. Sahil score 117 runs and 3 wickets in that Amdar Chashak 2026 by Udargat Manrem. Pitch delivery and goes over the cover. Got the elevation as well as the placement. Gets off the mark with the boundary. Nandan, score moves on to 5. Wide being called by the umpire into shake and Mohsin Sheikh, the two umpires. And up goes the finger.
Yes, thank you, DJ. Bowler's name, please. Rohan. Vipin. Bipin bowling the second over. Shot. He is in terrific form. Thank you, DJ. As far as Mandrem Amdar Chashak 2026 is concerned, even though there was outstation players, but the man who scored the maximum runs, Sahil Arolkar, is on strike. Sahil Arolkar. Left alone and wide being signalled. Score moves on to 19. Well bowled, pacey delivery this time. Big appeal for caught behind, but the umpire not interested. Gives the final verdict in favor of the batter. Flicked on the onside. Single has been taken, so Kalpesh Gavas, Dipraj Gavas has been missing for Navim. Playing the short early this time, and another dot ball. They pick up a run. Thank you, DJ. 2 overs 22 and Sahil Gavas to bowl the third over. Thanks to all our sponsors, Autotech Boss, Yatin Parekh, Karan Parekh, Uday Madkekar, Rohit Monserrat, Biryani and more, Tony, Sky Motors, Norberts. Excellent bowling by Sahil Gavas, Priyesh Properties and Haider Ali 36. DANR, a real estate developer. A warm welcome to him. Shot. That is what he can do if you give him life. That catch should have been taken. It was
a simple chance for the fielder. Was comfortable under the ball but couldn't hold on. And now he is doing the damage here. Sahil Arulkar. Score moves on to 30. Shot. Again on the onside. This time just a single. Good throw. Good shot by Sahil Arulkar, right in the stands VIP box. He was dropped and he has scored 2 sixes after being dropped. This is just like hammering your finger. Tried for a slower ball. He takes it on the full. This time it's Samarth who takes a sharp catch. And Sahil departs. Thank you, DJ. Panjim Cricketers, which was founded by Vishant, Umesh Asgaonkar, Shekhar Kokorkar, and now the tournament, Autotech Panjim Cricketers, the All Goa Heavy Ball Cricket Tournament, Panchayat Municipality level, where the organizers have not taken any entry fee for the teams, and a cash prize of rupees 1 lakh and trophy for the winners, 50,000 rupees and trophy for the runners-up, semi-losers as well, and every man of them. Lakshman 45 on the scorecard with an over to go. Yes, thank you, DJ. Autotech Boss Car Accessories, the one-stop shop for the every requirement of your car. Another 6, 50 up. Latesh, the current Ambala of Goa, has been asked to bowl the final over and has been welcomed with the 6. $50 up for a team Parsem. You can certainly feel Navim not coming with their full strength squad. Kalpesh Gawas, Deepraj Gawas missing in the lineup. Also Gopal Gawas, Rohit Gadi not present in the lineup for the team.
Shot. 2 is the call. Sahil is called. Sahil is quick and should be just a single. Good throw as well. They are the best fielders. Sahil Gavas, Samarth Gavas. Very quick off the legs. Rohit Gadi as well. But he's missing today. In fact, Rohit Gadi is present. They might look for a couple. Samarth. Oh! Lucky. Very lucky. The backup was strong. 2 runs taken. This is the final over. And score 55. .55, 3 balls to go. Saish. 3 balls to go. 55. Saish on strike. On a bounce to Sahil Gauss. Will be just a single. Latish Gad, brother of Sanket Gad. Unable to clear the rope, and a wicket. Thank you, DJ. A new man in. Rohit. Outside edge. Oh, good stop. Very good stop. 2 and up goes the finger. Just a single. 57 after the end of 5 overs, setting a target of 58 to win for team Navim.
58 to win. Samar Gawas, and along with Samar, they have Avinash Gawas to bowl the first over. It will be Sahil, bowler. Sachin to bowl the first over. It will be Samarth on strike. Avinash at the non-striker's end. .58 to win. Oh, pulled. And Samarth gone off the very first delivery. This is a big blow for Navim. He came, he took the guard, and he disappeared. Big blow. Rohit Gadi. He's known as the Damakoli of the team. Rohit Gadi. 58 is the target. None for one. Played into the mid on. Quick single. Rohit is quick. Oh, shot. And that will clear the fence with some ease. Score 7 for 1. Switch it, but it finds the fielder this time. We get single 6 dot. 2 balls to go. On the full, but this time find a square leg fielder. Saish, the fielder, just a single. Also team Panjim not coming out with the full combination. Amir Sargaonkar, Rupesh Shivji, Rakesh Shivji, they are missing out.
Single. In fact, dot 9. 9 for 1. Rohit Gadi on strike. Left alone and helped with the wide. Into double figure 10. 58 is the target. Now 48 to win. Still chaseable. Bowler seems to be in trouble. Just bowled one delivery and might be getting cramps. Hot humid condition, never easy. You can see the players coming together to see how much bad is the injury. You can see the organizing team doing a fantastic job. No 12 men available for both the teams, but the organizing committee member rushes out with a water bottle and a spray to provide the first aid. This is the second last match of the day of the first session. After this will be the match between the winners of this match versus Suare, and that winner will be playing against team Shiroda to find the first semis of the first session. Thank you, MA, for the first aid. Ten. Oh, outside edge, is it? No. He was expecting a wide. Just a run coming in form of wide. 2 dot balls. Opaced, not timed, and Rohit Gadi has been dropped. They dropped Sahira Rukar. Now here Panjim drops Rohit Gadi. Sahira Rukar hit 2 sixes after being dropped. What can Rohit Gadi do? Left alone, might be second wide of the over. He's unable to find his line. Bowling a couple of wides in this over. Lack of timing.
and will be just a single. Very good bowling, no boundary in this over. That is what Panjim will be looking for. Try to keep the batters with minimum boundary balls, and that will take them close to the win. Whereas Navim will be looking to score at least a boundary compulsory in every over. Oh, good shot. Goes out with the breeze. And he makes them pay for the catch drop. Exactly what Saila Rolkar did. That 6 takes the score on to 19. On the scorecard. Now the fielder on the long on, long off. Straight down the ground in the V. Deep mid wicket. Cow corner and deep square leg. Down the ground. Should be just a single. Good throw on the full. Ends the over and it's 20 for 1 after 2 overs. Two overs, 20 for 1. 38 required in 18 balls as a bowler. Sahil bowler, Sahil. Shush. Missed time shot in the long off. Yes. Played on the onside. Should be a couple. In fact, they take a single. Swing and a miss, dot delivery.
Completion of 3 overs. It's 23, just 3 runs coming from the third over. Going derailing Navim team in the third over. Fantastic bowling. In fact, 5 dot deliveries. Rohit playing too many dot balls. Even though he has struck a 6, he is unable to keep the momentum going. Now 2 overs and 35 runs. 2 overs 35 is the equation. Sahil Arolkar to bowl the penalty mid over. They didn't get plenty runs in that third over. That might be one of the reasons they are chasing 35. And now, as far as this over is concerned, they will have to look to score at least 20. Nothing less than that. But it is against Sahil. Catcher is a call and good effort. Good effort. Should go for the second. Sahil departs. He was slow. He was very slow. Rohit being run out as Sahil walks in. DJ, thank you. Left alone, a wide wing called. Shot hooked and 6. They will have to do this on regular basis. Score 20, 31, 27 required. 27 in 10. Oh, another one. This is much longer. Sahil has been taken onto an attack here by Avinash Gauss. Thank you, DJ. Slower ball, very well bowled. Sahil knew that Avinash was looking for another biggie. Dot delivery back to back after consecutive 6s. Change of pace certainly working in favor of Sahil Arolkar.
Catch, that is the call and should be taken. So Avinash departs. Now they require 21 runs from the final over. Sahil up in the air, has got only the height, and Sahil departs. Now holding the grip here, team Parsem. In the third over, they lost the plot. Captain team Savivaram. Captain team Savivaram. Kindly come for the toss. Rohan, the left-handed batter. Navim on the verge of an exit here from the tournament. 4 dot balls in the third over. Rohit Ghadi. And also dropping Sahir Arulkar. Those 12 runs, those 2 sixes after being put down. Otherwise would have been chasing 9 runs. Now drives the ball, cover fielder will cut it off, single. Requesting the captain of Savivaram if you can come for the toss, because the next match will be played between the winners of this match. So looks like Parsem holding the grip. They picked up Samarth very early of the first ball. That was a big advantage for them to defend this total. Avinash gave a sight of relief with those 2 sixes. A lovely shot. One bounce into the fence. No, it has gone on the full. Three balls. 3 balls. $14 required from 3 balls. Still gettable. No ball, no white balls. Again keeping them in the business. He is making Navim believe that they can enter the next round. 2 sixes of the last 2 deliveries. Saish has been under the pump. 50 comes up. Now 8 required from 2. 8 required from 2. Can he get one more connection? Even the bowler will be under pressure. What an inning this is. Vignesh. Vignesh, can he be the Vignaharta for the Navim team? The bowler needs to focus. He cannot afford to bowl neither a wide nor a no ball. And the wicket keeper standing close now. Should pick up a couple. Oh yes, run out. So 7 required now of the final ball.
6 will be a super over. Seven from 1. Has he got hold of it? Yes, it's a super over. The first super over of the tournament. I think Dinesh Naik will be watching from the top and he will be pleased with this match. Both the captains come for the toss here. Sorry. Both the both the captain, please select your 3 batters. Captain, select your batters. बैटर सिलेक्ट करा 3 बैटर सांगा मरे DJ, we were calling the captain of Savevaram for the toss, but the toss has been delayed due to this super over. Sachin, who bowled the first over, got rid of Samarth Gawas. Will be bowling the first over again, and they are going out with Samarth Gawas and Avinash Gawas, the same pair. Samarth, he is very lucky to bat again in the same match. Super over this time. The last time Samarth played super over, he struck 5 sixes of Sarfaraz Nawaz at Muli Chashak. Missing the run up here. Oh, Samarth again.
And the bowler gets rid of Samarth. Second failure. One ball dismissal for Samarth again. And now if they lose a wicket, it's a packing for Navim. Vignesh, the new man in. Five balls remaining and last batting pair. Oh, very close. Two dot balls and a wicket. What a super over this is by Sachin. Good strike. Long off in position will be just a single. So now three deliveries to Avinash Gavas. Can he connect at least two of that? What a situation here. Super over. Wicket. Dot. Single. And the last batting pair. Again he fumbles with his run up. Oh, another dot ball. What a no. Now two balls to go. Only one run in the first four deliveries by Navim in the super over. Great bowling by Sachin. He'll remember this super over for a very long time if he doesn't concede any boundary in the next two. On the onside, hasn't got enough connection and they lose the wicket. So it's 2 runs to win for Team Parsem. Just 2 runs required in the super over. Thank you, DJ. So here we go with the first ball.
Straight into the block hole nicely. Batsman name please. The 12th man of both the teams requesting 12th man from the batting side. This time is powerfully struck. Just taking the full advantage of the power play restrictions. It was a powerfully struck for the boundary. So the first boundary for the team and for Sahil. Once again, this time onto the onside. There is protection in the deep. Nicely fielded. So a single boundary and a single to start the innings for Sahil in this first over. And Nandan will be on strike now. Diptish bowling the first over. Stoppage. Just over the keeper's head. Change of pace. Nicely deceiving the batter. Once again, wonderfully bowled by Diptesh straight into the block hole. Another dot delivery. This is the second day of the tournament. A wonderful organization. Everything is free, as we were told, for the players. Once again, didn't get the connection. Another dot delivery to finish off the first over. So after completion of the first over, score is 6 runs after completion of the first over per same team. Thank you so much, Iji. Amber to bowl the second over for his team. And both the openers still there. It was a wonderful over, I would say. Just a boundary considered in the first over by Diptesh. Sachin and Nandan for Parsem team. This time fuller delivery, powerfully struck and the ball goes but straight into the hands of the fielder. Didn't get the power behind that shot. And the first wicket down. Sahil departs. It was wonderfully bowled, much fuller delivery but had that pace Amber. Trying to clear the field. There was the deep fielder, the long on fielder and straight to him. So the first wicket down for Parsem team and Sahil departs.
Once again, much fuller delivery. Size just came in. Ball just changing the direction. And a couple of runs to start his innings for Saish. As you saw in the last delivery, Sahil departed. He was brilliant in the previous match. Once again, much fuller. They are bowling according to a plan here. The Survivor team, we saw in the first over also, was much fuller, and the change of pace always helps for any bowler. We also saw a super over in this tournament on this day too, the previous match. And then on strike. This time he finds the connection. Let's wait and watch. The ball sails over the top. And here's the first maximum. And a hike on the leg side. The first big one for the Panjim team and for Nandan. And that's the kind of shots all the spectators are waiting for. Once again, Nandan on strike. This time much shorter, and it's been dispatched. It goes over the squalic region for the second maximum, and back-to-back sixes to finish off the second over for Nandan. And after completion of 2 over, score is 22 runs with the loss of 1 wicket. Panjim team. Chandan Naik on his bowling mark to bowl the third over for Survivor team. Nicely started once again, nicely started. But those 2 crucial shots in the previous over helped the Panjim team. This time, quick through, but just missing the mark. And a quick single for Saish. Brings back Nandan on strike. We saw the 2 shots from this batter, and he needs to continue in the same manner, at least find 1 in each and every over. This time into the covers region, there is a fielder. Just falling short of him through his hands, and the ball races away towards the boundary ropes. So once again, a brilliant shot into the covers region by Nandan. Once again, this time the cutter doing the trick. Wonderfully bowled by Chandan. On good length, just turning away from the batter. Much fuller, much quicker. In the air, but short of that fielder trying to go for the second run. A wise call. Denying the second run. So another single added to the tally. Nandan doing the bulk of scoring in this inning. And this time Saish finds one, but straight to the deep fielder on the onside. Another single. And here is the end of the third over. So after completion of 3 overs, score is 29 runs with the loss of 1 wicket. Panjim team put into bed first. At the moment, Nandan is going pretty strong and needs to continue for his team.
Starting the fourth over for Saverian team. Once again trying to go for the second one. Quick run. And throw at the wrong end, I will say. Saish was much slow in his run up. Utkarsh bowling the fourth over. So couple of runs on the first delivery itself. Saish on strike once again. This time he finds the connection, but it's high up in the air. Fielder coming for the catch, and it's brilliantly taken. The long on fielder racing in, just steadying himself and taking a great catch, I will say, in the end to dismiss Saish. He was looking rusty, didn't find the shot, didn't find the connection, and finally he departs. So the second wicket down now for Panjim team on the score of 31 runs. Once again favoring the onside. One bounce to the fielder. A single. Anish, the new batter, just off the mark with that single. Wonderfully bowled. Decent pace by Chandan. And this time, it's just over the fielder. So the third maximum for Nandan. He seems to be in great rhythm. Just bowled those couple of deliveries outside the off stump where he couldn't get bat on it. But this time, much shorter onto the body. And it's been dispatched for a maximum. Third maximum for this batter. And with that maximum, it's high up in the air, once again trying to go for the big one. Fielder's coming underneath it. But a strong crease. Taking the ball just over the top. So back-to-back maximums. "44 runs on the board after completion of 3 overs. 4 overs. Nicely bowled. Much slower. Anish to bowl the final over of this innings for Saverian team. Utkarsh bowling the final over. No balls. So an opportunity here for the batter to free his arms. This is the last over, mind you, all of this innings. And Utkarsh with the ball. And free hit delivery now. A wide ball. It was a loosener way outside the off stump. Now he is feeling the heat here, Utkarsh.
Free hit continues. A no ball, then a wide. And now free hit delivery once again. Fuller delivery powerfully struck down the ground. There is protection in the deep. So great running. Quick couple of runs. The last over of this innings. And this time a full toss. The ball powerfully struck over the boundary ropes. So the maximum they were looking for, they have got it finally. Lakshman, the new batter, and doing the work for his team, for his side. They were put into bat first. And at the moment they are looking pretty good, I will say. The Savaveram team started brilliantly with the ball, and now this is last over going on. This time the slower ball, it's up in the air. Bowler himself going for the catch. And caught and bowl. Nicely taken by the bowler, Utkarsh himself. So another wicket down, and Lakshman departs. On the slower delivery, deceiving the batter completely on that occasion. And finding the right line and length on that occasion to just bowl the slower delivery. He was trying to go hard at it, but didn't get the connection he was looking for on top edge. And brilliantly taken by the bowler himself on his follow through. New batter in is Sachin. Will be on strike, will face Utkarsh in this final over. Another batter departs, trying to go for the big one. And Sachin departs. So great comeback by Utkarsh. Bowled that no ball, then extra. Then the full toss for a maximum. Then two great deliveries to get rid of two batters of Panjim team. Batter's name, please. Yes, Panjim team, batter's name, please. White ball. Trying to bowl that fuller delivery on the white mark. Rohit on strike. Replacing Sachin for Panjim team. Wonderfully bowled this time, much quicker. Ball is played toward the extra cover field. So more couple of runs. And with those couple of runs, we come to an end of the first innings after completion of the first 5 overs of this innings. Of this match, I will say. They have managed, Panjim team managed to score 57 runs. So the target is 58 for Savaveram team to win this match in 30 balls. 58 runs of 30 deliveries to win this match for Savaveram team.
58 runs to win. Last time they were chasing in the chased target was almost 48, somewhere around 48, which they finished in 2.1 overs. Now chasing 8 runs, 10 runs extra here. Chandan, and along with Chandan, it will be Rushikesh. Sachin to bowl the first over. He bowled very well in the mandatory power play and as well as in the super over. Pulled. And pulled for just a single. Single to get the innings going here for Chandan. That brings Rushikesh on strike. He also struck a few handsome sixes. But they are up against a different bowling attack, who bowled superbly against Navim, defending 58. Oh, shot! Rushikesh continues from very left in the previous match. 6 to begin his inning. Thank you, DJ. Krupesh Palkar, Amir Kadekar missing today. Left alone will be a wide. That happens when you are being hit for a 6. You try to change your line, and this time bowling too much wide. Low full toss. What a shot. Goes over the infield, over the covers. And what an effort. Saving 2 runs. 2 runs being saved. Good piece of fielding. Joining me, Sainath. This is his home ground. Outside edge and into the short third man will become a single. Score 11. Oh, miss-time shot, stood up in the air, and bowler makes no mistake. Gets big wicket of Chandan Naik. They got rid of Samarth Gawas in the first ball of the previous match, and now Chandan Naik departing after scoring just a single.
Thank you, DJ. New man in Yatin after the dismissal of Chandan. 11 for 1. Oh, shot. Huge 6 by Yatin. Shot. Wide of the fielder in long on. And should pick up a couple. Score moves on to 19. It all depends on Rushikesh, how big he can play, and Yatin, how well he can support him. Left alone and wide wing signal here. Punya Palkar. A few years ago, he was a part of that panchayat. Inside edge. This time just a single. Yatin, he plays all format. Tennis ball, light ball, leather ball. A very good cricketing mind, Yatin. He assesses the conditions. He reads the game very well. Drives the ball. Quick single. And overthrow. They should turn back for the second. They're going well in the run chase. They have lost just one wicket in form of Chandan Naik, but they have scored 23 runs into this second over. 35 runs required. Oh, the ball is up. Hasn't got enough bat. Fielder running long distance. And fortune in the favor of the batter. Pick up a couple. Good effort in the field here to recover a big ground. Almost reaching towards the ball, but bouncing inches ahead of him. That couple of runs takes the score into 25. Now 33 more required. Oh, shot. He got into position, switched his position,
and getting an excellent result as well. What a shot by Yatin. That is why I was praising him. He is a thinking cricketer. He just not keep playing shots premeditated. He plays as per the merit. His second six of the inning. Score moves on to 31. Now 27 required. 3 sixes in fact for Yatin. Steers the ball. That is what has been missing in the modern day cricket. The singles have been missing in modern day cricket. Yatin, after scoring a 6, he picks up a single because he knows Rushikesh at the other end is also striking the ball big. That marks the end of the second over. It's 32 going at 16 runs per over. Another 26 required in 3 overs with the required run rate of less than 9 runs per over. Left arm, lovely shot. Getting into position again quickly off the back foot. Shitosh bowling that over, number 3. Rushikesh on strike. Now 33. 25 required. 25 from 17. They are well within control of this run chase as the Panjim team are being forced to think here. Wide outside the off stump and umpire having a good look and then spreading his arms. Wide being called into shake and Punnapalkar, the 2 officials. Score moves on to 34. 24 runs required now. Attending a switch hit. We all look to keep ourselves groomed, and whenever you look to keep your vehicles also groomed with lovely accessories, you can always contact Autotech Boss in the heart of the city of Panjim. Taken on the full in the widest long on and should be a couple. The fielder skids, but good piece of fielding, keeping it to just a single. You can get a good sound system, amplifiers, woofers, speakers, tweeters. Then those upholstery with the car seats, dashboard. The tinting, wipers, the rear view cameras, the fog lamps, the alloy wheels. Shot! And in the gap. And away she goes. For a boundary. 1 bounce into the fence. This tournament has been organized by
Autotech Panjim cricketers in the memory of late Nasir Beig and Dinesh Naik. Late Dinesh Naik, who all we know very well. He was the finest of the all-rounder and one of the best personality. Dinesh Naik, late Dinesh Naik. Lovely shot again through the offside. One bounce, on a bounce. And another single. Score was down to 41 after 3 overs. So just 17 runs away. 2 overs, 17 runs to win. Picks up only a single on this occasion. They are taking casual first run. If they can look to score the first run quickly, there will always lie the opportunity to go for the second if there is slightest misfield. Now 11 ball 16. Ball 16 is the equation. Yatin goes down the ground. Should look for the second here. I think he has made it safely. Yatin, in fact, Rushikesh at the danger end. 14 required from 10. 10 balls 14 is the equation. If they get a boundary here and there, then it will be within touching distance. Slow ball, and he picked it up early. Just a single. Good fielding from Team Parsem. 9 balls 13. No boundary yet in the over. Into the 4th over of the innings. Requesting the captain of Team Shiroda to kindly come for the toss. Team Shiroda, captain, kindly come for the toss. Slow ball. And will be a dot ball. Important dot delivery here for Parsem. 8 balls 13. This time down the leg side. So 8 balls 12 now. And will be a 6. The shot that they were looking for has finally arrived. 6 required. In fact, yes, exactly 6 runs away. 1 shot away, and Rushikesh on strike with the ball to go in the over. Certainly not enough runs, especially against Team Survivor M.
They might be from Savavarem, for this ground is like a home ground for them. They've won a few tournaments on this ground. Full toss and a 6 to end the inning. Rushikesh scoring an important knock here. Thank you, DJ. I request our guest Vaibhav Mehta to kindly do the honors of presenting the player of the match. Autotech Panjim Cricketers player of the match goes to Rushikesh. Requesting Rushikesh to come and collect his player of the match award, and I request both the captains to come for the toss. Team Savavarem and team Shiroda. Both the captains kindly come for the toss. वैभव मेहता विल बी प्रेझेंटिंग द ऑटोटेक पेनजिम तुझ्या आयोजनाबद्दल आणि तुझ्या परफॉर्मन्साबद्दल. पयलीं म्हटल्यार ऑर्गनायझरांक थँक्यू म्हणूंक सोदता की फर्स्ट टायम दिसता गोंयान विथआवट एंट्री टुर्नामेंट जाता आनी आमकां चान्स दिलो ह्या हेका खेळपाक टुर्नामेंटाक म्हणून हांव ऑर्गनायझर थँक्यू म्हणटा. आनी अशें फर्स्ट टायमूच आसा की गोंयान विथआवट एंट्री टुर्नामेंट जाता आनी ऑर्गनायजूय बरो गेला विथ डिसिप्लीन. टाइम टू टाइम मॅची जाता. सो थँक्यू. थँक्यू ऋषिकेश. ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट मॅच.
एक बार सभी से स्वागत करते हैं इस बढ़िया आयोजन में। ऑटोटेक बॉस पंजिम और ये मुकाबला यहाँ पर इन दोनों टीमों के बीच में एक महत्वपूर्ण मुकाबला इस आयोजन का क्वार्टर फाइनल, तीसरा क्वार्टर फाइनल। आमिर गेंदबाजी के लिए तैयार, स्ट्राइक पर रहेंगे चंदन। पहली गेंद इस मुकाबले की, लेफ्ट आर्म क्विक गेंद, शॉर्ट गेंद और सीधे खेल बैठे हैं हाथों में। वहां पर खिलाड़ी 30 यार्ड घेरे के अंदर था और चंदन यहां पर चलते बने। पहली गेंद और पहली गेंद पर चंदन आउट। एक बड़ा झटका लगता हुआ यहां पर सावे वेरेम की टीम को। बढ़िया शुरुआत एक तरह से कहेंगे इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले की शिरोडा टीम द्वारा। आमिर पहली गेंद फेंकी, शॉट जरूर थी लेकिन ऊपरी भाग पर लगती हुई बल्ले के और लॉन्ग ऑन के फील्डर में सीधा थमा दिया कैच को। नए खिलाड़ी स्ट्राइक पर। एक बार फिर से पटकी हुई गेंद जरूर थी, इस बार गैप में खेलने में सक्षम रहे और गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार। सो पहली बाउंड्री, पहला चौका आता हुआ सावेवेरम की टीम के लिए। यतीन नए बल्लेबाज काफी बढ़िया खेले थे पिछले मुकाबले में भी और एक तरफ से अच्छी शुरुआत इस मुकाबले की। एक बड़ा झटका जरूर लगा है। चंदन पहली गेंद पर चलते बने लेकिन उसके बाद जैसे यहाँ एक शॉर्ट गेंद एक बार फिर से आमिर द्वारा, लेकिन इस बार लाइन थोड़ी गलत लेग साइड में और उसी के साथ आगे की हुई गेंद हवा में खेल बैठे हैं, काफी ऊपर जाती हुई गेंद। एक तरह से बढ़िया क्षेत्र रक्षण कहेंगे वहां पर। दो खिलाड़ी उस गेंद के पीछे भागते हुए लेकिन गेंद दोनों के बीच में गिरती हुई और इसके तहत और 2 रन जुड़ते हुए स्कोरबोर्ड पर। दोनों ही बढ़िया टीमें, दोनों ही अच्छी टीमें, काफ़ी दमदार खिलाड़ी इन दोनों टीमों में मौजूद और वही दर्शाना होगा क्योंकि एक महत्वपूर्ण मुकाबला है क्वार्टर फाइनल इस बढ़िया आयोजन का। इस बार लो फुल टॉस, टीम में खिलाड़ी मौजूद, केवल एक रन आता हुआ। ऋषिकेश रहेंगे स्ट्राइक पर। पहली गेंद खेलेंगे इस मुकाबले की। एक बढ़िया बल्लेबाज सावेवेरम टीम के ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। कुछ आकर्षक शॉट भी उनके बल्ले से देखने को मिले हैं इस मुकाबले में। इस बार आगे बढ़कर खेलने का प्रयास, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी को काफी आसानी के साथ क्लियर करके ये चौका। आगे बढ़कर खेलने का प्रयास था, काफी बेहतरीन कनेक्शन। ऑफ साइड में लाजवाब बैटिंग का मुजाहरा करते हैं ऋषिकेश और वही दर्शाते हुए इस बार लॉन्ग ऑफ के सर के ऊपर से जाता हुआ ये चौका, दूसरा चौका आता हुआ इस पहले ओवर में। आमिर दारोमदार संभालते हुए गेंदबाजी का पहला ओवर। एक लेफ्ट आर्म क्विक बॉलर, उसके तहत अच्छा मिश्रण भी करते हुए वो ऑफ कटर गेंदे।
बार फिर से सामना करेंगे ऋषिकेश। आमिर विद बॉल। फुलर गेंद, आगे की हुई गेंद और इसी के साथ डॉट बॉल के साथ पहले ओवर की समाप्ति होती हुई। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बनता हुआ 11 रन, 1 विकेट के नुकसान पर पारसिम। एक विकेट जरूर खोया है लेकिन 11 रन बनते हुए उस पहले ओवर में सावेवरम टीम के लिए उतने बड़े स्कोर देखने को मिले नहीं हैं आज। क्या ये वही मुकाबला होगा जिसमें कुछ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिलेगी, कुछ बड़े शॉट्स और उसी के तहत एक बड़ा स्कोर बनने के पूरे आसार जरूर है, लेकिन पूरा दारोमदार रहेगा इन दोनों ही बल्लेबाजों पर। एक तरफ है ऋषिकेश और दूसरी तरफ है यतीन। गेंदबाजी का मोर्चा संभालेंगे। बॉलर्स नेम प्लीज। सचिन, आशीष, आशीष दूसरा ओवर लेकर आते हुए यतीन रहेंगे स्ट्राइक पर। कट किया है उसे और बैकफुट फॉर्म का खिलाड़ी डीप में मौजूद दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे लेकिन वहां पर नकारा। एक अच्छा निर्णय जरूर कहेंगे। ऋषिकेश रहेंगे स्ट्राइक पर, सामना करेंगे आशीष का। धीमी गति की गेंद थी, फुल टॉस, उसे खेल दिया है हवा में और गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार। पहला छक्का आता हुआ सावेवरम की टीम के लिए और बल्लेबाज ऋषिकेश। कुछ अलग करने का प्रयास था आशीष द्वारा। धीमी गति की गेंद थी, लो फुल टॉस। इस बार तेज तरार गेंद लेकिन उसे बेहतरीन खेल दिया है सीधे डाउन द ग्राउंड और 2 रन जुड़ते हुए स्कोर बोर्ड पर। बढ़िया बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए ऋषिकेश अपनी टीम के लिए। फुल टॉस गेंद थी, उसे खेल दिया 6 रनों के लिए। उसके बाद जो तेज तरार गेंद उसे खेलते हुए डाउन द ग्राउंड सीधे बल्ले से खेलते हैं और आकर्षक शॉट उनके बल्ले से आते हुए। एक बार फिर से इस बार ऑन साइड में खेलने का प्रयास था। ताकत भरा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन पूरी तरह से चूकी एक डॉट गेंद। एक बढ़िया आयोजन ऑटोटेक पॉस्ट पंजिम द्वारा और 2 बढ़िया टीमें अभी ग्राउंड में मौजूद। आगे की हुई गेंद, फुलर गेंद, वहां पर कवर्स का खिलाड़ी आता हुआ और वहां पर गेंद छिटकती हुई। मौका जरूर बना था, बॉल तक पहुंचे भी थे लेकिन लपक नहीं पाए। गेंद छिटकती हुई और एक मौका मिलता हुआ, जीवन दान मिलता हुआ ऋषिकेश को। केवल 1 रन मिला लेकिन एक जीवन दान क्या ये महंगा साबित होगा, देखना होगा। क्योंकि जिस तरह की बल्लेबाजी ऋषिकेश करते हैं और जिस तरह की शुरुआत उन्होंने अभी तक की है, अच्छे लग रहे हैं। एक अच्छी रिदम उनकी बल्लेबाजी में नजर आती हुई और एक मौका गंवाया शिरोडा की टीम ने। एक बार काफी शफल कर लेग साइड में खेलने का प्रयास था, फाइन खेलना चाहते थे लेकिन डॉट गेंद और उसी डॉट गेंद के साथ दूसरे ओवर की समाप्ति होती हुई और 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर उड़ता हुआ 21 रन
21 runs on the board after completion of 2 overs for Suare team. दो ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन बोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर सावोवेरम की टीम। बेहतरीन गेंद, अच्छी शुरुआत जरूर, लेकिन क्या बेहतरीन शॉट वहां पर, रिवर्स शॉट, थर्ड मैन की दिशा में गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार चौके के लिए। अच्छी बल्लेबाजी। इसी बात की मैं बात कर रहा था कि पिछले ओवर में एक मौका जरूर छूटा था शिरोडा की टीम की ओर से, लेकिन अच्छी शुरुआत यहां पर तीसरे ओवर की करते हुए ऋषिकेश सोमेश आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। फुलर गेंद की जरूरत थी, लेकिन ऑफ साइड में बेहतरीन चौका। एक बार फिर से इस बार पटकी हुई गेंद उसी दिशा में, इनफील्ड को काफी आसानी के साथ क्लियर किया और ये दूसरा चौका आता हुआ इस ओवर का। बढ़िया शुरुआत, जिस तरह से यहां पर 2 चौके आते हुए ऋषिकेश के बल्ले से एक ही दिशा में। इस बार आगे खेलने का प्रयास था, थोड़ी सी शॉर्ट की हुई गेंद। एक अच्छा कमबैक जरूर कहेंगे सोमेश द्वारा। पहली गेंद थी, शुरुआत की फुलर गेंद के साथ, उसे खेल लिया रिवर्स शॉट थर्ड मैन की दिशा में चौके के लिए। उसके बाद थोड़ी शॉर्ट गेंद की थी, लूज जरूर थी, लेकिन एक दूसरा भी चौका आया उसी दिशा में। और एक तीसरी गेंद काफी बढ़िया गेंद, तेज तर्रार गेंद थी। एक बार फिर से बढ़ती हुई गेंद जरूर, लेकिन क्या लाजवाब शॉट था। इनफील्ड को काफी आसानी के साथ एक बार फिर क्लियर किया और 2 रन अपने खाते में जोड़ते हुए ऋषिकेश। अच्छे खिलाड़ी है, अच्छे टच में नजर आते हुए और ऑफ साइड को ज्यादा फेवर करते हैं। प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स जिसे हम कहते हैं, उनके बल्ले से नजर आते हुए। इस बार फाइन खेलने का प्रयास, वहां पर देखना होगा क्या गेंद बल्ले से लगी थी। एक रन। दो चौके जरूर आए, लेकिन उसके बाद एक अच्छा कमबैक कहेंगे। डॉट गेंद और सिंगल मिलता हुआ स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ। शॉर्ट गेंद, पटकी हुई गेंद, लेकिन काफी बाहर ऑफ स्टंप के। वाइट बॉल, एक अतिरिक्त रन स्कोरबोर्ड पर और इसी फाइट के साथ स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ 33 रन। पटकी हुई गेंद जरूर, देखना होगा क्या गेंद, और गेंद जाती हुई काफी दूर। एक बढ़िया शॉट जतिन के बल्ले से आता हुआ, एक बेहतरीन छक्का। और इसी के साथ तीसरे ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बढ़ता हुआ 40 रनों पर 40 रन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 39 रन 39 रन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर्स। सावोवेरम टीम
and 39 runs on the board. विश्वजीत चौथी ओवर लेकर आते हुए सामना करेंगे ऋषिकेश। फुल टॉस गेंद के साथ शुरुआत करते हुए सीधे खेल बैठे, फील्डर के हाथों में उतना कनेक्शन नहीं हुआ, संपर्क अच्छा नहीं, और ऋषिकेश वापस लौटते हुए पवेलियन की तरफ इस तरह से दर्शा रहा है कि बल्ला जरूर घूमा हाथों में। We would also like to welcome Dominic Briganda, sir. Welcome, sir, for this wonderful organization. For your dear friends of Dinesh Naik, sir, live together and those fond memories. We last with him, and at the moment it's a wonderful organization in his memory. The two great teams battling out in the center. Welcome, sir. Enjoy this match. Enjoy this quarterfinal, the third quarterfinal of the tournament going on at the moment. बल्लेबाज स्ट्राइक पर हैं, एक बढ़िया विकेट कहेंगे शिरोडा की टीम के लिए विश्वजीत प्राप्त करते हुए, क्योंकि एक अच्छी साझेदारी बन रही थी यतीन और ऋषिकेश के बीच में, लेकिन फुल टॉस गेंद थी, केवल करना था कि एक बढ़िया संपर्क चाहिए था लॉन्ग ऑफ के फील्डर को क्लियर करने के लिए, लेकिन बल्ला हाथ में घूमता हुआ और उसी के तहत अपना विकेट गंवाते हुए ऋषिकेश। इस बार एक ताकत भरा शॉट जरूर, लेकिन अलॉन्ग कार्पेट लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी के पास जाती हुई गेंद 1 रन के लिए। चालीस रन, 40 runs on the board. वाइट बॉल का इशारा एम्पायर द्वारा। हमने देखा है कि जो भी गेंदबाज रहते हैं वो प्रयास जरूर करते हैं कि उस वाइट लाइन की तरफ यॉर्कर जरूर करे, एक फुलर डिलीवरी जरूर करे, लेकिन इस बार चूकते हुए विश्वजीत एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ। इस बार फुल टॉस गेंद, धीमी गति की गेंद का प्रयास जरूर था, लेकिन गेंद जाती हुई काफी दूर। यतीन के बल्ले से आता हुआ एक बेहतरीन छक्का। यतीन के बल्ले से आता हुआ एक बार फिर से फुल टॉस गेंद कवर की दिशा में जरूर खेला है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद। 1 रन, एक विकेट जरूर चढ़का इस ओवर में विश्वजीत ने, लेकिन उसके बावजूद एक बड़ा शॉट यतीन द्वारा और इसे सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48 रनों पर। 48 runs on the board. एक बार फिर से फुलर गेंद, अपील जरूर कर रहे हैं, अपील करते हुए, लेकिन वहां पर कोई इशारा नहीं। डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति करते हुए 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बढ़ता हुआ 48 रन, 2 विकेट के नुकसान पर सावेवेरम की टीम।
48 runs on the board with the loss of 2 wickets. Here we go with the final over. लेकर आते हुए ये अंतिम ओवर पारी यदि होंगे स्ट्राइक पर फुल टॉस गेंद के साथ शुरुआत करते हुए पूरी तरह से चूके वहां पर तेज तर्रार गेंद थी डाउन द लेग. एक प्रकार से मौका जरूर था. भाग लेती हुई गेंद. सो डॉट बॉल के साथ यहां पर शुरुआत करते हुए एक बार फिर से अच्छी गेंद तेज तर्रार गेंद साइश द्वारा दूसरे रन के लिए जाना चाहेंगे और जाते हुए और यहां पर बलिदान देते हुए अपनी विकेट का अंबर. चाहते हैं कि यतीन ज्यादा से ज्यादा गेंदें खेले इस ओवर की और 4 गेंदें शेष इस ओवर में. उनचास रनों पर पारी का स्कोर पहुंचता हुआ. काफी गर्मी और तपती धूप में ये दोनों टीमें ये क्वार्टर फाइनल का मुकाबला खेलती हुई इस आयोजन में एक बढ़िया टूर्नामेंट. नई बल्लेबाज आते हुए दीप्तेश नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे और 4 गेंदें बाकी इस ओवर में. अंतिम 4 गेंदें इस पारी की. देखना होगा क्या कर पाते हैं यतीन अपनी टीम के लिए. 49 रनों पर स्कोर. दोनों ही बढ़िया टीमें चाहेंगे शिरोडा की टीम कि कुछ अच्छी गेंदें हो. फुलर गेंद डॉट गेंद बेहतरीन गेंद. आउटसाइड द ऑफ स्टंप जो लाइन हम लोग बातचीत कर रहे थे वही दर्शाते हुए साइश. और इस बार एक बढ़िया संपर्क गेंद जाती हुई डाउन द ग्राउंड. बढ़िया शॉट आता हुआ यतीन के बल्ले से और इसी की दरकार रहेगी. यही चाहते थे सवरवेरिन की टीम के सभी खिलाड़ी और सभी दर्शक भी. इस बार ब्लॉक हॉल में की हुई गेंद खोद कर जरूर निकाला. ऑफ साइड में खेला हुआ वो शॉट दूसरे रन के लिए जाएंगे और काफी आसानी के साथ भी दूसरा रन पूरा करते हुए एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ. वो थ्रो पर चौथे रन के लिए जाना चाहते थे लेकिन महत्वपूर्ण बात यह होगी कि देखना होगा कि स्ट्राइक पर कौन रहेगा. और एक बार वहां पर चौथे रन की दरकार जरूर थी. जाना चाहते थे चौथे रन के लिए लेकिन महत्वपूर्ण बात यही सावरवेरिन की टीम के लिए कि यतीन रहेंगे स्ट्राइक पर सामना करेंगे इस अंतिम गेंद का. सो 3 रन बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स जरूर कहेंगे. एक सुसाइडल रन जरूर था. क्या कर दरकार जरूर रहेगी एक बड़ी शॉट की. चाहेंगे कि ये बाउंड्री या एक बड़ा शॉट इस अंतिम गेंद पर आए. देखना होगा क्या कर पाते हैं. कहां पर गेंद होगी. साइश द्वारा एक बार फिर से अंतिम गेंद इस पारी की. यतीन स्ट्राइक पर साइश गेंद लेकर आते हुए इस बार डाउन द लेग. दूसरे रन के लिए जाना चाहेंगे लेकिन केवल 1 रन उस अंतिम गेंद पर और इसी के साथ पारी की समाप्ति होती हुई. 60 रनों की दरकार रहेगी. 30 गेंदों में 60 रन. यहां पर शिरोडा की टीम को 60 runs to get of 30 deliveries to win this match for Shiroda team.
Extra player, Shiroda. Shiroda, extra player, please. Warm welcome to Pundalik and Dominic Braganza. The two legendary cricketers. Pundalik Naik and Dominic Braganza on the dais. Very warm welcome. Dominic Braganza now handling Gino cricket team. Who are playing Goa Premier League at the moment at an Apex ground. Target of 59, 60 in fact, 60 to win for Team Shiroda. 60 in 30 balls. Diptesh to bowl the first over in the mandatory power play. Low full toss, flicked on the onside. 2 is the call. But we'll have to settle for a single. Chandan dying after getting off to a very good start in the first match. A soft dismissal in the second and third as well. He'll be wishing his team can reunite together and sniff a win here to enter the semi-finals. They are down the leg side. They are up against Team Shiroda, who have a very good combination. They have kept them under 60. Now chasing a target of 60. They are 2 without loss. Good looking shot and 6. Score 8. Loose delivery from Diptesh. Diptesh just cutting down on the pace ever since he recovered from his injury. He was one of the fastest bowler along with Amir Kadekar. Banged in shot this time. Cut away. Finds the fielder. Just a quick single. As you can understand, after injury, many fast bowlers have cut down their pace. And mostly the fast bowlers are the one who goes under surgery many a times. Looking to hit the ball hard this time. Somesh will pick up a single. Score 10. A very good start. Positive start here from the two openers. 12 is the required run rate per over. They have got 10 from the first with couple of balls to go. Oh, what a delivery right up in the block hole. Nothing much the batter could do. And especially when you have that delivery in your armory, the batter keeps guessing. When is that Yorker coming up your sleeve? A dot ball to end the over. It's 10 without loss.
Amber will be bowling the second over. Somesh on strike. Yesterday we had Police Sub Inspector Sanil Sawant Desai. Today we have Police Sub Inspector Somesh. Pulled and straight into the hands of the fielder at the deep mid wicket. So Somesh departs, adding strengthening the Goa Police team. Sunny Kanekar and Somesh Prabhu Desai. Amir Gadigar. Will be on strike. Shuffling and playing the ball fine. No chance for the fielder to cut it off. Well placed here by Amir. Shuffling early and picking up his spot beautifully. That boundary takes the score on to 14. Over pitch delivery driven down the ground, picks up a single, moves on to 15. Left alone, wide is a goal by the umpire. 16 with that extra. Both the batters having a few words in between them. Oh, good shot, but fielder at the long off makes no mistake. They lose their second, but the opener is back in the dugout into the second overs. 2 wickets here for Amber. You better Swayam. 16. 16 for the loss of 2 wickets into the second over. Oh, wide is it? Yes. Left alone. It was a wide full toss. In fact, no ball being called. The ball is up in the air this time. It was a free hit delivery. Won't make any difference even if the catch is taken. Only if run out might make
They pick up 2. Score moves on to 19. Well picked up. And should be just a single. Two overs have been bowled. Scored 20 for 2. 40 required from 18 balls. Chandan to bowl the third over. Oh, drop. What a drop this is. Dropping it over the deep backward square leg for a huge 6. Missing the length on that occasion, Chandan Naik. Give ample of time for the batter to hike the ball for the deep backward square leg region. Score moves on to 26. Dead ball. Now chance. And taken. So Chandan striking after considering a 6. 26 for 3. Newman and Samir Gaukar having lost 3 wickets for 26, chasing 60. Chandan after 6 breaks the partnership. Next match coming up, Darbandura and Talegaon, both the captains. Kindly come for the toss with your playing list. I request Pundalik Naik to join us for the toss. Chandan striking back to back, 2 wickets down.
Oh, into the deep backward square leg on a bounce. Score 27. Score 33. So 33 on the scorecard. So 27 required in 12. Swing and a miss, not delivery to begin the penultimate over. Left alone, wide called 34. Unchanged field 34. Short and just going past the outside edge of the bat again. A skiddy delivery from the bowler. Goes over the infield on the offside. Will be a single. After this match, I request the teams Darbandura and Taligaon to kindly take the Nasir Beig dugout and Dinesh Naik dugout. Another great delivery. They have the bowling firepower. That is why they have been defending runs. Oh, switch it attempted another dot ball. This time taken. Another wicket down. So the pressure can be clearly seen on the batters. They know that boundaries are not coming. So they have to take risk, and this time the risk not paying off, but finding the field in the long off region. I would like to thank our sponsors, Autotech Boss, Yatin Parekh, Karan Parekh, Uday Madkekar, Rohit Monserrat, Biryani and more, Tony,
Sky Motors, Norbert, Sunrise Foods, Bharat Electricals, Mr. Danish, Bhumipitra Shetty Enterprise, Sargaogar Ply and Paint, Sargaogar Shoes, a hotel by Sayaji, Sadawat, Presh Properties, and Hyder Ali 36. Starts off with the dot 35. 25 required. Slices it straight into the hands of the deep extra cover. Pundalik Naik has flipped the coin, and I think it has gone in favor of Team Talegaon, who has won the toss and opted to field. Oh, this is a big, very big shot. Oh, this square leg. They're trying their best, but are way behind the required run rate. 41. This is Kaya. That single takes the score on to 42. Still 18 required. Back to back dots. Like single and a dot. 42. Match is almost done and dusted here for Team Shiroda. No ball being bowled. And the ball has vanished. So that ends the match in favor of Team Savaveram, who becomes the third team to enter the semis. And they continue their good luck on this ground. Yet another semi-finals to Team Savaveram. I request Dominic Braganda sir to kindly do the honors of presenting Autotech Panjim Cricketers Player of the Match award. And it goes to Player of the match goes to Yatin. 15 balls, 32 runs knock. Yatin. Direct yojo Yatin.
we have one of the legendary cricketer all the way from Mapsa who played cricket in UAE as well. Will be receiving the Yatin will be receiving the player of the match from one of the finest cricketer we are blessed to have. पूण वत खूब आशिल्ल्या कारणान मातशे त्रास जाता खेळपाक ताका लागून दिसता की 1 रन 2 रन काडपाचे पूण एक्चुअल थंय वत गेले की मातशे त्रास जाता 1 रन 2 रन काडपाक पूण बाकीचो ओवरऑल टुर्नामेंट असलो फर्स्ट टायम आनी वन ऑफ द बेस्ट. आणि ते गरमेचे म्हटल्यार आमी तुमच्या खातीर ते रेफ्रिजरेटर सुद्दां दवरलेलो आसा जेणे करून तुमकां थंड उदकाची सुद्दां वेवस्था मेळटली. हय ते एक सामकें बरें केल्लें आसा उदक आपल्याक जाय तितलें पिवपाचें तेजें कांय टेन्शनूच ना. Thank you, Yatin. All the best for the remaining matches. You'll be playing tomorrow, the second semi. I request Sunil Naik to kindly present a token of love to our guest Dominic. One cricketer presenting a moment to other cricketer. Thank you, sir, for gracing this occasion with your presence. We are blessed to have you as a guest. Requesting the 12th man of both the teams to please be here in the commentary box. मागता मातसो दोनाय टिमी लागीं 12th man मातसो हांगासर धाडचो आमकां प्लेयर्सांची नांवां कळोवची. Requesting both the teams extra men जर तुमचो आसा जाल्यार बी तुमी बेगीन धाडचो हांगासर बॅटिंग सायड बॉलिंग सायड. बॅटर्स नेम प्लीज बॅटर्स नेम मातशें आमकां बॅट्समॅनाची नांवां कळोवची तशेंच बॉलराचें नांव कळोवचें. पहली गेंद अच्छी गेंद वहाँ पर तेज तरार रनिंग बिटवीन द विकेट्स के इसके साथ पहला रन यहाँ पर स्कोरबोर्ड पर जुड़ता हुआ. अच्छी शुरुआत दोनों ही सलामी बल्लेबाज. एक तरफ है साहिल दूसरी तरफ है विजय. विजय अपना खाता खोलते हुए उसी सिंगल के साथ 1 रन के साथ और गेंदबाजी का मोर्चा संभालेंगे शिवा. और यहाँ पर एक बेहतरीन शॉट गेंद जरूर थी. पहली गेंद जिस तरह से खेली है एक ताबड़तोड़ शॉट जैसे ही बल्ले से छूकर गेंद निकली वो सीमा रेखा पार जाती हुई पहला छक्का आता हुआ यहाँ पर धारबांडोरा की टीम को और साहिल के बल्ले से आता हुआ ये पहला छक्का. बढ़िया शुरुआत साहिल द्वारा. इस बार रिवर्स हिट का प्रयास था. उतना बढ़िया संपर्क नहीं है लेकिन 1 रन लेने से नहीं चूकेंगे. दूसरा दिन इस बढ़िया आयोजन का और दूसरा सेशन
दूसरा सत्र शुरू होता हुआ। इसी मुकाबले के साथ धारबंदरा और तालिगांव की टीमें आमने सामने। अच्छी गेंद इस बार गुटलैंड के तहत की हुई गेंद, दोनों ही लेग साइड पर खिलाड़ी मौजूद। डीप फील्डर पावर प्ले का पहला ओवर, केवल 2 खिलाड़ी 30 यार्ड घेरे के बाहर और दोनों ही लेग साइड पर मौजूद, दोनों ही दाएं हाथ के बल्लेबाज। क्रीज पर धारबंदरा की टीम के लिए विजय और साहिल। शॉर्ट गेंद और उसे केवल गाइड कर दिया है 4 रनों के लिए। पहला छक्का और इसके बाद ये चौका आता हुआ यहां पर साहिल के बल्ले से। बढ़िया शुरुआत। जिस तरह से एक बार फिर से गुड लेंथ की गेंद, इस बार लाइन में थोड़ी तब्दीली जरूर की थी। विकेट पर की हुई वो गेंद, लेकिन 1 रन मिलता हुआ और इसी 1 रन के साथ पहले ओवर की समाप्ति होती हुई। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बढ़ता हुआ 14 रनों पर 14 रन्स विदाउट लॉस ऑफ एनी विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट ओवर। धारबंदरा टीम लेट्स डीजे। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बढ़ता हुआ 14 रनों पर। ब्लॉक होल में की हुई गेंद, पहली गेंद सीधे ब्लॉक होल में करते हुए नरेश गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। यहां पर दूसरा ओवर लेकर आते हुए नरेश तालिगांव की टीम की ओर से। नरेश पाकलो, काफी जाना माना नाम तालिगांव का। धीमी गति की गेंद, एक बार फिर से वो लेग कटर। जैसी गेंद बाउंस हुई अंदर की तरफ बढ़ी। हमने देखा कि पहले ओवर में जिस तरह की गति उनको मिली थी, साहिल को खास करके बढ़िया शॉट्स उनके बल्ले से देखने को मिले थे। लेकिन एक बार फिर नरेश, वही गेंद, धीमी गति की गेंद, काफी बेहतरीन गेंद। वहां पर बल्ला जरूर घुमा रहे हैं लेकिन कोई संपर्क नहीं हो रहा है गेंद और बल्ले के बीच में। पूरी तरह से चकमा देने में कामयाब रहे हैं पहली 3 गेंदों पर। जिस तरह से उंगलियों का जादू यहां पर बिखेरते हुए नरेश। अच्छी गेंदबाजी, इस बार शॉर्ट गेंद, वहां पर कोई मौका नहीं खिलाड़ी के पास और गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार चौके के लिए। अच्छी गेंदें जरूर देखने को मिली थी, लगातार अच्छी गेंदें थी, थोड़ी आगे की हुई गेंदें थी, स्लो गेंदें, लेग कटर, लेकिन उसी बीच में एक शॉर्ट गेंद। साहिल एक बार फिर से स्ट्राइक पर। इस बार आगे बढ़कर खेलने का प्रयास था, काफी अच्छा संपर्क जरूर हुआ है, खिलाड़ी मौजूद, बढ़िया क्षेत्र रक्षण वहां पर लॉन्ग ऑन की फील्डर द्वारा। एक रन। एक बार फिर से आगे बढ़कर खेलने का प्रयास, इस बार लॉन्ग ऑफ के सर के ऊपर से गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। बढ़िया शॉट विजय द्वारा और इसी छक्के के साथ दूसरे ओवर की समाप्ति होती हुई। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बढ़ता हुआ 25 रनों पर 25 रन्स विदाउट द लॉस ऑफ एनी विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ओवर्स।
थैंक यू सो मच जी। निखिल यहाँ पर पहली गेंद लो फुल टॉस थी, सीधे खिलाड़ियों के हाथों में जरूर थी वहां पर, लेकिन चटकती हुई फिर एक बार। एक मौका जरूर बना था, उतना बढ़िया संपर्क नहीं था, निचले भाग पर जरूर लगी थी ये गेंद, 1 रन मिलता हुआ। सैफ वहां पर फील्डर बाउंड्री रोप्स पर तैनात, अच्छे फील्डर है अपनी टीम के लिए, लेकिन जिस तरह से गेंद गई उनके पास, शॉर्ट गेंद और क्या बेहतरीन संपर्क, बढ़िया संपर्क वहां पर विजय द्वारा, ताकत भरा शॉट 6 रनों के लिए पीछे। थैंक यू, बढ़िया शॉट, बेहतरीन शॉट, शॉर्ट गेंद थी, शॉट हम पुल, ताकतवर भरा शॉट। एक बार फिर से धीमी गति से गेंद, मौका जरूर था, पैरों पर की हुई गेंद, एक लो फुल टॉस, चूंकि फाइन खेलना चाहते थे, वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, सीधे कमेंट्री बॉक्स के सामने। बेहतरीन गेंद, अच्छी गेंद, गुड लेंथ पर की हुई गेंद, बाउंस होकर गेंद बाहर निकलती हुई, और वही खासियत भी है इस लेफ्ट आर्म बॉल के पास। एक बार फिर से आगे बढ़कर खेलने का प्रयास लॉन्ग ऑफ की दिशा में, 1 रन और एक जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड पर, और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 रनों पर, 33 रन ऑन द बोर्ड। अच्छी साझेदारी यहाँ पर, पहली ओपनिंग साझेदारी। और इस बार यहाँ पर बेहतरीन कैच, और इसी के साथ साहिल वापस लौटते हुए पवेलियन की तरफ। रिक्वेस्टिंग द ओनर ऑफ पुष्पा इलेक्ट्रिकल्स टू प्लीज बी ऑन द डेज, म्हाका सोरा लागी द ओनर ऑफ पुष्पा इलेक्ट्रिकल्स मातशें येवन माचयेर बसचें आनी हो टुर्नामेंट एन्जॉय करचो. येस सर. Requesting the captains of Karem team and Sakri team to please come for the toss. Both the teams, you will be having the next match, so requesting both the teams captains to please have a toss, and requesting both the teams to please submit their players list. Karem team and Sakri team captain, please come for the toss. Batsman name please. और जिस तरह की बढ़िया शुरुआत यहां पर शिवाजी आए हैं बल्लेबाजी के लिए, और क्या ताबड़तोड़ शॉट. विजय थे स्ट्राइक पर, लाजवाब शॉट. उनचालीस रनों पर स्कोर पहुंचता हुआ विजय एक बार फिर से स्ट्राइक पर, और इस बार क्या लाजवाब शॉट, ताकत भरा शॉट 6 रनों के लिए. थैंक यू सो मच. क्या लाजवाब यहां पर बल्लेबाजी करते हुए विजय अपनी टीम के लिए चौथा छक्का उनके बल्ले से आता हुआ. इस बार धीमी गति की गेंद थी, वहां पर काफी आसानी के साथ कवर्स के फील्डर को भेदा और गेंद निकलती हुई. देखना होगा इशारा. 4 रनों के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए विजय, 2 छक्के और एक लाजवाब शॉट यहां पर कवर्स की दिशा में 4 रनों के लिए.
और उसी चौके के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 49 रनों पर 49 रन्स ऑन द बोर्ड। बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए विजय, 4 छक्के 1 चौका उनके बल्ले से आता हुआ अभी तक। एक बार फिर से ऑन साइड में खेलने का प्रयास जरूर था। लीग बाइस का इशारा एम्पायर द्वारा। बढ़िया शॉट शिवाजी द्वारा इस बार काफी आसानी के साथ यहां पर पॉइंट के ऊपर से खेलते हुए और गेंद निकलती हुई सीमा रेखा पार 4 रन। बढ़िया शुरुआत, बढ़िया बल्लेबाजी दोनों ही खिलाड़ियों द्वारा। जी लाजवाब बल्लेबाजी यहां पर करते हुए विजय एक तरफ जरूर मौजूद है। टेक बहादुर गेंदबाजी का मोर्चा संभाले हुए तालीगांव टीम के लिए काफी महंगा और साबित होता हुआ। शॉट गेंद, बढ़िया संभर, क्या लाजवाब हिटिंग चल रही है यहां पर। ताकत भरे शॉट्स नजर आते हुए धारबांदोरा की टीम की ओर से। एक तरफ है विजय और दूसरी तरफ शिवाजी, और इसी के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 60 रनों पर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर्स। बॉलर्स नेम प्लीज, बॉलर्स नेम प्लीज। अनिश अंतिम ओवर लेकर आते हुए पहली गेंद पर एक सिंगल मिलता हुआ 1 रन। स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ 61 रनों पर। शिवाजी और विजय दोनों ही बल्लेबाज मैदान पर मौजूद धारबांदोरा की टीम की ओर से। जिस तरह से बल्लेबाजी रही है, खास करके विजय की ओर से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। बढ़िया गेंद, तेज तरार गेंद आउटसाइड दी ऑफ स्टंप। रन के लिए जरूर गए, काफी आसानी के साथ 1 रन मिलता हुआ। 22 का इशारा। इम्तुज सर और मोहसिन सर दोनों ही ऑफिशियल्स, दोनों ही अंपायर इस मैच के लिए, इस मुकाबले के लिए। अच्छी शुरुआत जरूर हुई है अनीश द्वारा इस फाइनल ओवर की, अंतिम ओवर की। एक बार फिर से वही प्रयास था, ऑन साइड पर खेलने का प्रयास था, पूरी तरह से चूके। डॉट गेंद, अंतिम ओवर इस पारी का, लेकिन बढ़िया गेंदबाजी। काफी महंगा ओवर था, चौथा ओवर, लेकिन उसके बाद जिस तरह से शुरुआत की है अनीश ने, फुलर गेंद आउटसाइड दी ऑफ स्टंप,
कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले के बीच में। 2 डॉट गेंदे, लगातार डॉट गेंदे। देखा है जिस तरह की बल्लेबाजी विजय द्वारा हुई थी, ऑन साइड पर काफ़ी अच्छे शॉट्स, बड़े शॉट्स लेग साइड में, लेकिन जैसे ही बॉलर ने लाइन चेंज की है, धीमी गति की गेंद, कुछ अलग करने का प्रयास था और चौका खा बैठे यहाँ पर। धीमी गति की गेंद करने का प्रयास था, फुल टॉस गेंद और गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। अंतिम गेंद और स्ट्राइक पर रहेंगे विजय। अनिश गेंद लेकर आते हुए एक बार फिर से अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, दूसरे रन के लिए जाना चाहेंगे नहीं, और इसी के साथ इस पारी की समाप्ति होती हुई स्कोर पहुंचा है 66 रनों पर। 67 रन ऑन द बोर्ड, 66 रन, 67 runs on the board, 68 runs is the target। 68 रनों का लक्ष्य रखा है यहाँ पर तालिगांव टीम के लिए। धरबांदुरा टीम की बढ़िया बल्लेबाजी खास करके विजय द्वारा। 68 runs to win in 30 deliveries is the task for तालिगांव टीम। थँक्यू डीजे। साखळी टीम मातशी तुमची टीम लिस्ट दिवची मुन्ना। थँक्यू डीजे। साखळे म्युन्सिपालिटी टीम साखळे बेगीन येवची आनी तुमी टॉस करतो। तुमची प्लेइंग लिस्ट हांगाच बरोवन दिया आमकां, जर्सी घालून मात या। बॅट्समॅन किरण एंड नरेश। कैप्टन टीम साखळे नवनाथ। कैप्टन साखळे। साखळे कॅप्टन मातसो येवचो बेगीन कॉमेंट्री बॉक्सा कडेन कॉन्टॅक्ट करचो।
Next match coming up between Karem and Sakri. Both the captains are ready for the toss. And the first ball of the run chase here. Naresh on strike. Kiran at the non-strikers end. And Ganaraj at the bowling mark. The first ball single. Full toss flicked on the onside. And will be a boundary. Very well placed. Finding the gap. He was helped by a full toss delivery. And he had to just put the ball in the gap with the timing. Score moves on to 5. Oh, lovely shot this time over the covers. Consecutive boundaries here. Naresh. Three balls and 9, chasing a target of 68. The highest total of the day so far. Looking to slog sweep, goes along the carpet, will be just a single, and this brings Kiran Shirvoikar at the striking end. Up in the air. Kiran out. We have Suresh, a proprietor of Pushpa Electricals, to flip the coin. Requesting Rohit Alankar. Shoaib at number 3. Rohit. What's the toss here, Rohit? Pulled away and one bounce into the fence. Third boundary of the over. Score 15 for 1. 14 for 1. Oh, shot! What a shot, boy! Naresh switching his position. Karem won the toss and opted to field first.
Kamlesh. Ramesh. Sliced into the gap. Consecutive boundaries again. They might have scored runs, but they are also licking runs here. They single taken. A mighty total on the scorecard, 68 to win, and in the pursuit they are 23 for 1. This is second over in progress. Swing and a miss. Dot ball. Another dot ball. 20 over. Good finish because he went for 2 consecutive boundaries early in the over. 23 for 1 after 2 overs. Another dot ball. So plenty of dot deliveries have been played suddenly by Team Talegaon. That will just force them to play some risky shots later on if they don't get runs. Lovely shot over the mid off. In fact, it has gone all the way. Pulled deep square leg region. Down the ground, long off, just a single. Well picked up on the onside. Second 6 of the over.
Over-pitch delivery right up in the block hole. Nothing much the batter could do on that occasion. Squeezes out and a dot delivery to mark the end of the over. 36. Sangam bowling the fourth over. Wide being called. Back-to-back wides. Trying to keep the ball away from the range of the batter, and he is missing the range of the guideline. Picks up a single. 39. Shoaib picks up a single, goes at the non-striker's end. He struck 2 boundaries early in his inning. Oh, pick up shot down the ground. Oh, poor running. They should have run for the 2. He thought the ball would be travelling for a boundary, but not to be so. Shoaib this time slogs the ball on the onside, will pick up a single. (41). Top edge and good catch. Saif Ali Karazgi is at the crease. He is a very good leather ball cricketer. Pulled and pulled for half a dozen. I think Taligaon has missed a trick here. He has been coming late down the order. Thank you, DJ. They have missed a trick. Saif Ali Karizki coming so down the order. Then you have to blame yourself if you end on the losing side.
Oh, lovely. Fielder running underneath, and he has been picked up. 6 and then dismissed. Thank you, DJ. End of the over. It's 47. Another 21 required now from the final over. Take Bahadur walking at the crease. Toss one by Karem, and I've opted to bowl, requesting Karem team to kindly take the field as quickly as possible. Outside edge and another dismissal. Dattaraj Gauss making no mistake. So 21 of 5. Santosh Dhanumanan. Swing and a miss and a wide wing signal. Now 20 required from 5. Dot delivery. Now 20 from 4. He was lining up for big shot, and now the match almost gone. 3 balls, 20. Now the dot. Requesting team Karem and team Sakri to take the Nasir Beig dugout and Dinesh Naik dugout respectively. Another dot ball. Santosh. Oh, full toss being missed. So he's a 0 not out. Requesting Junaid Sayed to kindly do the honors of presenting the player of the match. And the player of the match goes to Vijay. 37 runs in 16 deliveries. Man of the match, Vijay.
विजय विजय Vijay, the Autotech player of the match. Autotech Panjim Cricketers player of the match. Vijay, 37 runs in just 16 deliveries for Dharbandura. Will be receiving the player of the match from our guest Junaid Syed. Thank you, DJ. विजय तुमचे धारबांदोड्यांत खूब टुर्नामेंट जाता आसतले पण एक असो टुर्नामेंट जो वेगळ्या प्रकारचो आसा आयोजकांनी खंयच्याच टिमी कडल्यान एंट्री घेवना आनी बक्षीस दवरला 1,00,000 ट्रॉफी विनर्सांक रनर्सअपाक 50,000 ट्रॉफी आनी प्रत्येक प्लेयराक मॅन ऑफ द मॅच एक फास्ट ट्रॅकाची घडयाळ आनी तुमी पळयत जाल्यार प्रत्येक टिमीक जर्सी सुद्दां तेंच्यांनी दिल्ली आसा. कितें सांगपाक सोदता तूं ह्या आयोजना बद्दल? बरो ऑर्गनायज केला हो टुर्नामेंट. अशें आजून पर्यंत गोंयान खंय जायना एंट्री फ्री आसता ती. बरो ऑर्गनायज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू ऑटोटेक. Yes, thank you, Vijay, and all the best for the next match. Requesting Muzeb to kindly present a token of love to our guest for his presence towards the tournament, gracing the tournament with his presence. Requesting Surla and Vasco, both the captains, to please come for the toss with your playing list. Surla and Vasco team. Match will be played of 4 overs. The next match. Surla and Vasco. Twelfth man of both the teams. मागता मातशें 12th man दोनाय टिमीचो मातसो कॉमेंट्री बॉक्सान येवचे. ट्वेल्थ मॅन मागता हांव मातसो साखळी टिमीचो 12th man मातसो बेगीन येवचो कॉमेंट्री बॉक्सान. ये मुकाबला
दोनों ही टीमों के बीच में शुरू होता हुआ एक तरफ है साखलिम की टीम और दूसरी तरफ है खरेम की टीम। खरेम की टीम ने टॉस जीता, पहली गेंदबाजी का फैसला। बहुत ही बेहतरीन शुरुआत यहां पर मंजू द्वारा पहली बाउंड्री, पहला चौका आता हुआ साखिम की टीम के लिए। इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर की हुई गेंद, तेज तरार गेंद, लेकिन वाइड बॉल का इशारा एम्पायर द्वारा। इस बार ऑन साइड में खेलने का प्रयास, खिलाड़ी नीचे आते हुए और एक बार फिर से काफी कैच यहां पर छूटते हुए देखे हैं। आज के दिन है और उसी दिशा में एक बार फिर से मौका जरूर बना था। शॉर्ट गेंद, तेज तरार गेंद, हाउस कॉर्नर की दिशा में खेलने का प्रयास था, लेकिन इस बार स्विच हिट, रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास, कोई संपर्क नहीं, डॉट गेंद क्लियर करते हुए और इसी के साथ गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार। दूसरा चौका आता हुआ इस ओवर का। रोहित गेंदबाजी के लिए आते हुए दूसरा ओवर लेकर, धीमी गति की गेंद थी। मागता वास्को टीम लागी बेगिनच्या बेगीन येऊन तुमची प्लेयर्स लिस्ट ही आमकां दिवची। रिक्वेस्टिंग द टीम कैप्टन ऑफ वास्को टीम, प्लीज सबमिट योर प्लेयर्स लिस्ट। एक बार फिर से वही प्रयास था, ऑन साइड में खेलने का प्रयास, धीमी गति की गेंद। अच्छी शुरुआत कहेंगे दूसरी ओवर की, अच्छी गेंदें लगातार, धीमी गति की गेंदें। एक बार फिर से वही धीमी गति की गेंद हवा में जरूर, और यहां पर पहले विकेट का पतन होता हुआ। एक बार फिर से अगेंस्ट लाइन क्रॉस खेलने का प्रयास, ऊपर ही किनारा लगता हुआ और काफी आसानी के साथ कीपर के हाथों में जाती हुई गेंद। सितेश नए बल्लेबाज, सितेश फील्ड में तब्दीली, वहां पर डीप फील्डर को स्क्वायर लेग की दिशा में काफी स्क्वायर। एक बार फिर से वही धीमी गति की गेंद, लेग कट हटकर खेलने का प्रयास था, शफल करके खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, फाइनल खेलने का प्रयास, लेकिन कोई संपर्क नहीं, डॉट गेंद। बेहतरीन गेंदबाजी रोहित द्वारा, लगातार अच्छी गेंदें करते हुए। इस बार तेज तरार गेंद,
और एक मौका बनता हुआ और काफ़ी आसान कैच। सो दूसरा झटका लगता हुआ यहाँ पर साक्रीम की टीम को और दूसरी सफलता प्राप्त करते हुए रोहित इस ओवर में डीजे। थैंक यू सो मच जीजे। चाहेंगे कि दोनों ही टीमों के कप्तानों से कि थोड़ा जल्दी कीजिए और भी मुकाबले बाकी आज के दिन। दोनों ही एम्पायरों से निवेदन रहेगा कि जल्दी जल्दी खिलाइए। शिवराम बाएं हाथ के बल्लेबाज यहाँ पर क्रीज पर मौजूद। रोहित एक बार फिर से गेंद लेकर तैयार। अपील कर रहे हैं और यहाँ पर डॉट गेंद और इसी के साथ 2 ओवर के बाद 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर मेडन ओवर, मेडन और 2 विकेट। क्या लाजवाब गेंदबाजी, वंडरफुल बॉलिंग परफॉर्मेंस बाय रोहित फॉर हिज टीम, फॉर करीम टीम डीजे। थैंक यू सो मच दीजिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर साक्रीम की टीम और सागर आए हैं गेंदबाजी का मोर्चा संभालने के लिए। तीसरा ओवर लेकर आते हुए सागर। गुडलैंड की गेंद, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, काउच कॉर्नर की दिशा में खेला हुआ ये शॉट सिंगल के साथ शुरुआत करती हुई स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रनों पर। लेकिन बात करें पिछले ओवर की, क्या लाजवाब ओवर था रोहित द्वारा। धीमी गति की गेंदें, लेग कटर, बीच में एक तेज गति की गेंदें, 2 विकेट चटकने में सफल रहे थे। और मेडन ओवर, विकेट मेडन ओवर जो कि दूसरा ओवर था। यहाँ पर रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास एक बार फिर से चूके, कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले के बीच में। 2 बड़ी सफलताएं प्राप्त कर चुके हैं करीम की टीम। देखना होगा क्या कर पाते हैं। अभी एक साझेदारी की आवश्यकता होगी साक्रीम टीम को। इस बार गेंद खड़ी हो चुकी है और बेहतरीन कैच अपनी गेंदबाजी पर, अपनी फॉलो थ्रू पर अच्छी तरह से जज किया और एक विकेट का पतन होता हुआ तीसरी विकेट यहां पर प्राप्त करते हुए। ये नए बल्लेबाज क्रीज पर आते हुए अभिजीत। मंजू अभी भी वहां पर मौजूद नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। सीधे ब्लॉक हॉल में की हुई गेंद, अच्छी गेंद अलोंग द कारपेट खेल दिया है। दूसरे रन के लिए जाना चाहेंगे, लेकिन क्या बेहतरीन एफर्ट फील्ड में। पिकअप एंड थ्रो, क्विक रिलीज और इसी के तहत केवल 1 रन स्कोरबोर्ड पर जुड़ता हुआ। पटकी हुई गेंद
डाउन द ग्राउंड खेलना चाहते थे, आगे बढ़कर खेलने का प्रयास था मंजू द्वारा, लेकिन जैसे ही देखा कि कुछ चहलकदमी हो रही है, गेंद को शॉट कर दिया, अपनी लाइन को वहां पर सुधारा। अच्छी गेंदबाजी, लगातार अच्छी गेंदें। इस बार फिर एक बार आगे की हुई गेंद पूरी तरह से मिसफील्ड होती हुई, उसके तहत एक अतिरिक्त रन, 2 रन स्कोर बोर्ड पर जुड़ते हुए, और इसी के साथ तीसरी ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचता हुआ 16 रनों पर, 16 रन 3 विकेट के नुकसान पर साकिम की टीम डीजे। ऋषि है गेंदबाजी करने के लिए, चौथा ओवर लेकर 16 रन है 3 विकेट के नुकसान पर साकिम की टीम। शॉट गेंद के साथ शुरुआत की है, क्या लाजवाब शॉट, बेहतरीन शॉट, स्टंप पुल, ब्यूटीफुल, सीधे सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए बेहतरीन शॉट। अभिजीत, एक बढ़िया शॉट उनके बल्ले से आता हुआ, और इसी की दरकार रहेगी साकिम टीम को। इस बार अपनी लाइन से चूक के ऋषि, जैसे ही पहली गेंद पर छक्का लगाए, थोड़ा दबाव जरूर उसमें महसूस करेंगी फील्डिंग साइड, और खास करके गेंदबाज। एक बढ़िया संपर्क, बढ़िया शॉट जरूर देखने को मिला है अभिजीत के बल्ले से। और एक बार फिर से बढ़िया प्रहार जरूर है, काफी ऊंची गई है गेंद, और गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार। लगातार 2 छक्के आते हुए इस खिलाड़ी के बल्ले से अभिजीत ऑन द चार्ज। डीजे, लाजवाब बल्लेबाजी एक तरह से अभिजीत द्वारा, काउंटर अटैक चल रहा है, 2 गेंदे 2 बड़े शॉट्स। इस बार कवर्स की दिशा में खिलाड़ी वहां पर मौजूद, और यहां पर विकेट, बढ़िया कैच, जगलिंग कैच। तीसरे छक्के के लिए जाना चाहते थे, तीसरा बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन अभिजीत वहां पर निराश होकर वापस लौटते हुए, उतना बढ़िया संपर्क नहीं हो पाया। Thank you, DJ. Requesting the captain of Vasco team and Surla team, please come for the toss. Vasco team, please submit your players list and please come for the toss. You will be having the next match. मागता बाकीच्या सगळ्या टीमिंकडे की मातशें बेगीन करचे, चड वेळ काडचो न्हू, मॅचीस उरल्या, त्यो बरी डे लायट आसतना आमकां कंप्लीट करपाक जाय, सो मागता तुमच्या लागीं मातशें बेगीन करचें, चड वेळ काडचो न्हू। वास्को टीम, सुर्ला टीम मातशें बेगीन टॉसा घेवचे, तुमची प्लेयर्स लिस्ट घेवन। आमकां ओव्हर्स कमी करपाच्यो ना, सो रिक्वेस्ट तुमकां। शॉर्ट गेंद के साथ एक बार फिर से आफ्टर द ऑफ स्टंप नवनाथ, नए बल्लेबाज, 1 रन के साथ अपना खाता खोलते हुए, और नॉन स्ट्राइकिंग एंड से मंजू स्ट्राइक पर आएंगे। काफी देर से नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़े हैं। एक बार फिर से संपर्क जरूर बढ़िया है, और गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। इस बार मंजू के बल्ले से आता हुआ एक बेहतरीन शॉट, नीचे।
धीमी गति की गेंद कवर्स की दिशा में, एक बार फिर से दूसरे रन के लिए जाना चाहते हैं और काफी आसानी के साथ 2 रन प्राप्त करते हुए, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई स्कोर पर पहुंचता हुआ 38 रनों पर 38 रन्स ऑन द बोर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर्स। साक्री टीम थैंक यू सो मच शिवम। शिवम आए हैं गेंदबाजी का भार संभालते हुए अंतिम ओवर। पहली गेंद नवनाथ है स्ट्राइक पर, डॉट गेंद, धीमी गति की गेंद, आउटसाइड द ऑफ स्टंप, गुड लेंथ की गेंद, पल्ला जरूर घुमाया। इस बार गेंद खेल बैठे पॉइंट फील्डर के हाथों में और एक झटका लगता हुआ। नवनाथ काफी नाखुश दिखते हुए मंजू चाहते थे कि स्ट्राइक पर आए, लेकिन और एक विकेट का पतन होता हुआ साक्रीम टीम के लिए। बिखरती हुई साक्रीम की टीम और एक विकेट का पतन। तेज तरार थ्रो जरूर था विकेट कीपर द्वारा, लेकिन एक अतिरिक्त रन। नो बॉल का इशारा एम्पायर द्वारा, नो बॉल यानी कि फ्री हिट। एक मौका बनता हुआ समीर के लिए। उतना बड़ा संपर्क नहीं वहां पर क्षेत्र रक्षक मौजूद। एक बड़ी रिलीज, बेहतरीन थ्रो और एक सुसाइडल रन आउट बलिदान देते हुए समीर के लिए। और एक विकेट का पतन होता हुआ, विकेटों की झड़ी लग गई है इस मुकाबले में, और एक विकेट का पतन साक्रीम टीम के लिए। बेहतरीन शॉट, लाजवाब शॉट, मच नीडेड बाउंड्री, जिसके लिए यहाँ पर रुके थे समीर। चाहेंगे साकी की टीम की ज्यादा से ज्यादा रन बनाए। बेहतरीन शॉट, दूसरे रन के लिए जाना जरूर चाहेंगे, दूसरे रन की दरकार रहेगी और काफी आसानी के साथ 2 रन मिलते हुए इस मौके पर। यस, डिसीजन प्लीज। सो केवल 1 रन मिलता हुआ। दूसरे रन की दरकार थी, लेकिन डायरेक्ट थ्रो।
We would like to welcome Sagar sir and Dattaguru sir for this tournament, requesting them to please be seated and enjoy the match. धीमी गति की गेंद एक बार फिर और डॉट गेंद. और इसी के साथ पहली पारी की समाप्ति होती हुई स्कोर पहुंचता हुआ 46 रनों पर. 46 runs. 46 runs on the board. So the target is 47 runs of 30 deliveries to win this match for Karem team. Requesting all the teams to please be ready. Please get ready quickly. Once again, the target is 47 runs of 30 deliveries for Karem team. चला बॅट्समॅन बेगीन देवा. बॅट्समॅन DJ Rohit Halankar and Anand Mandrekar, the two openers for Karem team. 47 is the target. Low score here by team Sakri. Navnath Kamath to open the innings. Requesting Surla team to kindly be ready to take the field as soon as this match comes to an end. Don't take a long time. Slow ball to start with. Long on. Wicket number 1. Rohit Halankar has to walk back as soon as he arrives. Next man, come on please. Batsman मातसो बेगीन येवचो. बॅट्समॅन तुमकां डगाडू लागीत दवरला. DJ batsman Sagar, the new man. None for one. Slower ball again, goes past the outside edge. Now not starting with two slower deliveries. Manjunath behind the stumps. Siddesh behind the stumps. Another slower delivery. This time getting the corner edge of the bat. And moving into the gully. Single gets off the mark. And now Anand Mandrekar.
Goes for a slower delivery and just stopping short of the fielder. He hasn't gone for pace in this over. No, not. He knows the boundaries are not that big. If you can change the pace, falls, make the better player false stroke, you might certainly pick up a wicket as he has already done in the first ball. Oh, swept up and over. He picked the length early. That is what Anand Mandrekar is known for. Score moves on to 7. Short cut straight to the fielder. Unable to pierce the gap. 7 for 1. Completion of 1 over. सुरला टीम फुडल्या मॅचीक तुमी रोखडेच फिल्डिंग दिवचे जशी मॅच सोंपता आनी बॅट्समॅन वास्कोचे तुमी रेडी रावचे बॅटिंगेक देवपाक. Tukaram to bowl the second over. A token of love being presented to Pundalik Naik for gracing this tournament with his presence. Thank you, Pundu. The tiger, as he was famous for. Left alone wide. Score moves on to 8. Drives the ball, backward point, single, wide and a single. Score moves on to 9. Sakri knows they are defending only 47. This is the lowest total of the day. Again up in the air to Karem himself. Holds on, what a good catch. Get rid of the danger man. Anand Mandrekar has to walk back. Both the openers back in the pavilion inside the 9 deliveries of the innings. Thank you, DJ. Rahul, the new man in. Score is 9 for 2. Both the openers back in the dugout. We have 2 dugouts, Nasir Beig dugout and Dinesh Naik dugout for the 2 teams respectively. Swing and a miss again, this time to Karem, bowling much further. This over just 2 runs and a wicket, a wide single wicket and a dot. Now the dot. Over pitch delivery driven down the ground. Will pick up a single.
Down the ground again, and fielder holds on. What a catch. He timed the jump perfectly. They lose their third. They are continuing to lose wickets at regular intervals. They are making this run chase difficult for them. Thank you, DJ. Sitesh. They have plenty of all-rounders in their lineup. Yuvraj, another all-rounder missing. Full toss. This is poor delivery. And gets hold of this one. They were struggling for runs, but Sitesh bowls a full toss ball, which they won't let go. Score 16. Oh, back to back. This will ease the pressure on Team Karem. Score 25. Just 22 runs more required. Sitesh being under pressure. Full toss again. This time just a single. 24 runs more to get. Played down the ground into the cow corner. A single taken. That single takes the score to 24. Now 23 to get. Just a single. (26). Thank you, DJ. Wonderful lyrics by Nigam Naik of Photosonic Production, who helped to make this song. Manjunath. Pulled on the onside. And now the single. Scored 26. Now 21 required. In 11 balls, 21. Dropping it short, and in the vacant region, Shivram Kamath. Couple of runs taken, 2 runs taken. (19 runs required now. More required of 10. Otherwise, there will be a run out. 18 now. 9 ball 18. 12 runs per over.
Oh, this is going. And going for half a dozen. 12 required now. Eight balls, 12. That 6 has just released the pressure of Karem. Swing and a miss. Dot ball. Another swing and a miss. Dot ball to end the over. 6 balls, 12. Yes, thank you, DJ. Wonderful service by Autotech boats, car accessories, durable products. You can rely with their quality. Miss time shot. Single taken, double is the call. Might be a run out. Now 11 from 5. This match is going close. Requesting Vasco and Surla to please come close to the dugout. Team Vasco and Surla, both the teams come close to the Nasir Beig dugout and Dinesh Naik dugout. Slow ball down the ground in the lawn. Might be another single. So 2 balls, 2 singles. Now 10 required from 4. Still, it is difficult to predict the winner. Very good start to the final over. He gets a boundary. In fact, the ball slowing down, but has got enough bat to take it over the fence. Another single taken. Two balls, 5 and a single taken. The boundary required of the final ball. Last ball boundary required. What will happen? We have seen at Morjem 1 ball 5 required, 6 been hit by Prem Korgaonkar. Now 1 ball 4 required. What can he do? A change in field. Oh, he connects. And he finishes off in style. Under pressure, delivering that knockout punch and dispatching Sakri out of the tournament.
Thank you, thank you, thank you, DJ. Requesting both teams kindly take the ground. Team Surla to take the field. Thank you, Team Surla. And openers of Vasco. Vasco openers, come on, kindly come at the grid. Already the fielding team is on the ground. We have seen some good discipline shown here by Team Surla. Man of the match, Rohit. Rohit, 1 over. First maiden over of the tournament and 2 wickets. I request both the guests to jointly present this Autotech Panjim cricketers player of the match. So Rohit has been awarding his man of the match to Rahul. Our guest of the evening. Sagar and Dattaguru sir presenting the player of the match. Rohit giving away his player of the match to Rahul. And a token of love from the organizers to the guest of the evening. Over to Sainath. Yes, thank you so much. So let's continue with this match between the two teams. It's Vasco against the Surla team. First ball, a dot ball, 12th man. Yes, fielding side. Surla team, bowler's name please. 12th man please in the comment box. Sanket to bowl the first over for Surla team to start the proceeding, and started brilliantly with the dot ball. And nicely struck, powerfully struck. The ball goes all the way for a maximum one. It's a huge one and a great start by Vasco team. Trying to go for the cut shot there. This time charging the bowler, but couldn't get the connection. Ball just turning away from the fielder. Third man inside the 30-yard circle. This is the power play over the first over. So just two fielders outside the 30-yard circle. The two opening batters are out with the ball to bowl the first over for Surla team. It's high up in the air. And it's been taken, so the first wicket down and OS departs without troubling the scoreboard.
Asif, the new batsman, walking in to replace Oves. Sanket with the ball once again. Much fuller, this time outside the off stump, nicely played by Asif. They're going for the second run and they will get it quite easily in the end. So great running between the wickets by both these batters. And here is the end of the first over. After completion of the first over, score is 9 runs on the board with the loss of 1 wicket. Vasco team, TJ. So 9 runs coming off that first over, but they have also lost the wicket, Vasco team. And here it's Saish to bowl the second over for Surla team, Saish Zore. And Vikas on strike. Started off with the over pitch ball. It's high up in the air, fielder settling underneath it. And it's nicely judged there. And it's been taken quite brilliantly. The ball was meant to be hit, but couldn't get the connection. Couldn't get the power, I would say. It was high up in the air and nicely taken by the fielder. Yasin, the new batsman in. Nicely played there. It was slower one. They're trying to go for the second one. No. So the brothers at the moment on the crease for Vasco team. Yasin and Asif. Nice start of the second over for Saish. Bowled the slow one. Got the wicket. Thereafter again much slower. So they have lost a couple of wickets in the first 2 overs. So they will be heavily relying on this partnership now. Much fuller but straight to the fielder. Trying to go for the run but nicely fielded. Munna the fielder, but here is an extra run. And they're going for another and they will get it quite easily. So instead of a dot ball, they have managed to score 2 runs. Important couple of runs added to the tally. Great match awareness by both these batters. This time trying to just play that on the onside. Just hit it high on the blade and straight to the bowler. And Yasin departs. So the 3rd wicket down now for Vasco team. Asif departs. Trying to go on the onside but didn't get the connection. Just the top end of the blade. And unhappy with Sam. Now 3rd wicket down for Vasco team. DJ.
Yes, thank you so much, Ajay. Siddiq, the new batter in. Much slower. Nicely guided just for a single to the third man. They have lost the wickets. 3 wickets back to back. In a quick succession here. The Vasco team. And quiet over till now. Haven't conceded a boundary. Nicely played along the carpet there. So just a single. So after the completion of the second over, score is 14 runs with the loss of 3 wickets. Vasco team, DJ. Thank you so much, DJ. Sunny to bowl the third over for Surla team. 14 runs on the board. Much fuller delivery this time onto the leg stump. Nicely heaved on the leg side. Nicely gathered by the deep fielder. Quick release, just a single. They were put into bed first, the Vasco team, and they have lost wicket pretty cheaply. Trying to cut it. A dot delivery. Nice bowling effort till now by the fielding side. Surla team started off by Sanket, then Saish, and now Sunny. Once again, a heave on the onside. There is protection in the deep. A small fumble. Trying to go for the run. Just a single, just a single. With that single, score moves on to 16. They have started brilliantly here, Surla team. Much fuller delivery this time to the covers fielder. Another single. So now they are not getting the balls to free their arms to find that boundary. The much needed boundary. Every time they have tried something, they have lost the wicket, and now they are going for a big shot once again, trying to go for a big one, and this time the longer fielder takes a easy catch in the end. So another wicket down, the 4th wicket down for Vasco team. DJ. Trying to go for a big one, another wicket down. So back-to-back wickets for Sunny and for Surla team. For a big one, another wicket down. So back-to-back wickets for Sunny and for Surla team. So another wicket departs. They are coming and going at the moment, the Vasco team. So after completion of 3 overs, score is 17 runs on the board. DJ. Fahim, the new batter in, and will be on non-striking end. And Ayush to bowl the penultimate over, the 4th over for his team. Just 17 runs on the board after the 3 overs.
So started off with the white. Ayush. Score moves on to 18 runs now. Much fuller delivery, but this time no ball signaled by the official. I will outside the crease, outside the wicket. So it will be a free hit. Chance to Yasin to free his arm to score a boundary, at least go for it, and a free hit delivery straight away for Yasin. An opportunity. Trying to cut it, but this time outside the off stump. Two-way delivery. Another wide ball. So free hit continues. 3 extras in this over. Still haven't bowled a delivery, but 3 extras. Free hit continues. And this time he finds the connection, but straight to the point fielder. It was a free hit ball. So great fortune for the bowler, I will say. Yasin couldn't find the gap between those fielders, and it was straight to Munna. But it was a free hit delivery. So Yasin still there. And this time much fuller plate. Down the ground. Much powerfully struck, but straight to the fielder. They had just a single for that shot. It was bowled fully straight into the block hole. Ayush. 2 great deliveries after those extras. So dot delivery there. This time a waiver delivery once again. This bowler bit struggling with his line and length. Ayush not getting it right. This time a bit slower, shorter delivery. Couldn't get the connection, couldn't find that power behind that shot. Not getting his timing right on that occasion for him. They are bit in a strain here. Vasco team lost the wickets early, and now trying to gather a respectable target for the opposition team. Surla team pretty decent with the ball. Just Ayush struggling a bit in this over. Shorter delivery once again. Much slower, missed by the keeper, but nicely backed up. This is just the first inning going on of this match. Vasco team put into bat. Another dot delivery, wonderful delivery, 24 runs on the board. They're not able to find the connection between bat and ball at the moment. Not getting those boundaries also. Boundaries are right up. And that's the pressure of the wickets, fall of wickets. This time the shorter delivery, but there is protection in a deep. So just a single. Score moves on to 25, and here is the end of the 4th over. So 25 runs on the board after completion of 4 overs. Vasco team, DJ.
Omkar to bowl the final over for Surla team. Wonderful delivery. Bowling around the wicket to Yasin, who is struggling a bit at the moment. Has not found his timing right in this innings. But still 5 deliveries left in this innings. Can he do something? Can he deliver for his team? Much fuller into the gap. Brilliant effort, brilliant effort. The one-hand effort there by the fielder in the deep. Saved 3 runs for his team. Wonderful effort, so 3 runs saved on that occasion. That's the kind of efforts which boost the confidence of any bowler. This time it's high up in the air. And finally they have found the boundary they were looking for. The batter just came in and powerfully struck the most needed boundary. And it's a huge one. A 6. Yes, thank you so much, TJ. Salahuddin Sallu with that maximum 1. Again, walking across, trying to go for that single. It wasn't there. So, suicidal run. New batter walking in is Farooq and will be on non-striking, and Yasin will be on strike. Wonderful delivery and a dot ball to finish off the innings. So they have managed to score 32 runs, 33 runs is the target for Surla team to win this match. A low scoring match. So just 33 runs needed to win this match in 30 deliveries for Surla team. DJ. Yes, thank you, DJ. Just 33 runs to get from 30 balls.
And to bowl the first over, it will be Vishal bowling the first over. Sai Zore on strike. Recently travelled to Mumbai to play the President Cup. Inside edge to the wicket keeper. Vishal bowling the first over. Team Vasco being controlled to just 32 runs. The lowest total. Full toss. And down the ground will be a single. And one bounce over the bowler's head this time. Oh, overthrow. I think they themselves want the match to be finished early here. Score moves on to 6 of the very second delivery. As Sahih Zore gets bonus 4 runs. Oh, pulled handsomely. Should get a boundary. 6 and 4, 10 runs. Sai Zore. Already 10 runs. Now 23 required. Sawaram chased the target in 2.1 overs. Will that record be broken here? Oh, well bowled. He's eyeing that onside boundary. On the full. Hasn't type. Another dot ball. After 10 runs, couple of dot deliveries bowled by the bowler. Vishal. Oh, lovely. Reverse and 6 more. He got into position nicely, picking up the length, and 16 runs of the very first over. First over 16, Akshay. Akshay on strike. Salahuddin bowling the second over. Oh, hooked. And catch taken. So they lose the first wicket, Surla. 16 for 1. Who will be the new man in? Come on, new batter, please, hurry up. Thank you, DJ. Thank you, DJ. Next batsman. और मागता प्रत्येक बॅट्समॅनान रेडी रावचो फुडल्या विकेट पडटकूच बॅटिंगेक देवपाक टायम काडपाचें न्ही प्लीज. अजून 2 मॅची खेळपाच्यो उरल्या.
Shuffles and might be another wicket. Yes, it is. 22. On a possible hat trick. Dot delivery, 3 dot balls after 16 runs coming of the first over. Another swing and a miss. Will this be a maiden over? .33 was the target, 16 already, so 17 required. The ball is up, and I think it will land safely. Suare happy with the single. Saish back on strike. Last ball of the over. Will he look to take a single or hit a big shot? Wide. 18. Now 15 required. Cuts the ball. He wants the strike. So happy with the single. 2 overs. It's 19 for 19 for 2. To bowl the third over. Siddiq. Dot delivery. This time 2 is the call by Suare, looking for the second. The batter skids at the non-strikers at the striking end, but still make it for a couple. Now 12 required. Down the ground, long off is wide enough, and he gets a boundary. Score moves on to 25. Just 8 runs more required. Requesting the captain of team Karem
to kindly come for the toss. Captain of team Karem. This is straight to the fielder. I think the win has been delayed here. It required. Jayant Satodkar picks up a single to get off the mark. Seven required now. Slow ball. Scores are level. Now just one run away from the win. Karem, captain, kindly come for the toss. That's the winning run. And captain Karem, Captain Karem. मातसो बेगीन यो टोसाक पात्रांव. Captain Surla. DJ, thank you DJ. Both the captains kindly come for the toss. Requesting Viraj Kamath to kindly do the honors of player of the match. And Sai Zore is the Autotech Panjim cricketers player of the match. Sai Zore, if you can come and collect your player of the match. Sai
मागता मागचे बिगिन करचे दोन टीमी लागी मागता बॅटर्स प्लीज हरी अप. थैंक यू सो मच जी. संकेत गेंद लेकर तैयार. रोहित ऑन स्ट्राइक. पहली गेंद फुल लेंथ की गेंद. रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास था लेकिन कोई संपर्क नहीं और पहली गेंद पर यहां पर विकेट चटकती हुई सुरला की टीम और एक बड़ा झटका लगता हुआ खरेम की टीम को रोहित पवेलियन की तरफ वापस लौटते हुए डीजे. Twelfth man of Karem team, please be in the commentary box. Batter's name, please. Karem team, your 12th man, please. सागर. अच्छी गेंद एक बार फिर से बेहतरीन गेंद. यहाँ पर हवा में गेंद एक बार फिर से. खिलाड़ी वहां पर बेहतरीन कैच जिस तरह से ग्राउंड कवर किया और ये दूसरा झटका लगता हुआ खरेम की टीम को. अभी भी खाता नहीं खुला है और दूसरा झटका लगता हुआ खरेम की टीम को. Thank you so much, TJ. This is the tournament wonderful organization by Autotech boss Panjim in loving memory of Dinesh Naik and Nasir Beig. फुल टॉस गेंद थोड़ी ऊपर आती हुई गेंद. उस तरह से टाइम नहीं कर पाए थे अपनी जंप को और यहाँ पर पहला रन आता हुआ स्कोर बोर्ड पर खरेम की टीम के लिए. जिस तरह की गेंदबाजी हुई है पहली गेंद पर विकेट उसके बाद और एक विकेट 2 विकेट थे लेकिन खाता भी नहीं खुला था. लेकिन अभी एक रन बनता हुआ स्कोर बोर्ड पर और रन होंगे स्ट्राइक पेयर. एक बार फिर से कटर. बेहतरीन बॉलिंग बेहतरीन शुरुआत एक तरह से संकेत द्वारा सुरला की टीम के लिए. अच्छा मिश्रण करते हुए कोई मौका नहीं दे रहे अभी तक. हमने कोई लूज गेंद नहीं दी, कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं कर रहे हैं. अपनी लाइन और लेंथ के तहत जानते हैं कि तेज तरार गेंद नहीं कर सकते. एक बार फिर से फुलर गेंद. वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी और इसी के साथ एक सिंगल रन प्राप्त करते हुए पहली ओवर की समाप्ति होती हुई. पहली ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचता हुआ 3 रन 2 विकेट के नुकसान पर खरेम टीम.
बंद करो। धन्यवाद डीजे। 3 रन बोर्ड पर पहली ओवर। एक बढ़िया ओवर सुरला की टीम के लिए और दूसरा ओवर लेकर आते हुए साहिश। बेहतरीन गेंद, तेज तरार गेंद, पैरों पर की हुई गेंद, अंदरूनी किनारा जरूर लगा था वहां पर। ऑन साइड पर खेलने का प्रयास, लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन, दाएं हाथ बाएं हाथ के खिलाड़ी वहां पर मौजूद खरेम की टीम के लिए, लेकिन एक साझेदारी बनानी होगी। भाई भाई सुरला की टीम के लिए खेलते हुए एक बार फिर से धीमी गति की गेंद। क्या लाजवाब गेंदबाजी देखने को मिलती हुई। पहले हमने देखा संकेत और अब साइश। भाई भाई एक भाई ने बढ़िया ओवर देखने को मिला पहला ओवर, और भाई दूसरा भाई दूसरे ओवर के साथ शॉर्ट गेंद, खिलाड़ी वहां पर मौजूद। एक एफर्ट जरूर था, सिंगल हैंड एफर्ट, एक हाथ से कैच के लिए गए थे लेकिन मिस फील्ड होती हुई। और इसी के साथ 2 रन और स्कोर बोर्ड पर जुड़ते हुए स्पार डाउन द ग्राउंड। गेंद निकल रही है लेकिन बढ़िया एफर्ट, बेहतरीन एफर्ट, उतने बढ़िया तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाए थे वहां पर विकास। केवल 1 रन मिलता हुआ। आनंद होंगे स्ट्राइक पर। ज्यादा गेंदें नहीं खेली आनंद ने, काफी देर तक नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़े थे। धीमी गति की गेंद, इस बार कनेक्शन जरूर है लेकिन खिलाड़ी के हाथों में खेल बैठे और ये बड़ा झटका लगता हुआ। आनंद वापस लौटते हुए पवेलियन की तरफ। काफी देर से नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़े थे लेकिन जैसे गेंद मिली और ये विकेट का पतन होता हुआ। बढ़िया गेंद, बढ़िया संपर्क जरूर है लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद और सीधे खिलाड़ी के हाथों में। सो 2 गेंदों पर 2 सफलताएं प्राप्त करते हुए साइश, और इसी के साथ 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचता हुआ 6 रन और 4 विकेटों का पतन होता हुआ। डीजे बैट्समैन नेम प्लीज। दीपक। लाजवाब गेंदबाजी का मुजाहरा यहां पर सुरला की टीम द्वारा होता हुआ। पहले हमने देखा संकेत को 3 रन दिए, 2 विकेट, उसके बाद उनके भाई साइश द्वारा भी वही प्रदर्शन दोहराया गया, 3 रन और 2 विकेट दूसरे ओवर में भी। और इसी सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ 7 रन और 4 विकेट। इस बार
लेग साइड पर खेलने का प्रयास था, लेकिन डाउन द लेग वाइड बॉल का इशारा एम्पायर द्वारा। सनी आए गेंदबाजी का मोर्चा संभालने के लिए। जिस तरह की शुरुआत देखने को मिली, बेहतरीन शुरुआत एक तरह से इस मुकाबले की। इनटू द ब्लॉक हॉल, बेहतरीन गेंद, कोई मौका नहीं विकास के पास, उसे खोद कर निकालना चाहते थे लेकिन असफल रहे। और एक डॉट गेंद, जैसे जैसे डॉट गेंदें बढ़ेंगी प्रेशर बनेगा, दबाव बनेगा बल्लेबाजों पर। इस बार क्या पिकअप शॉट, जो रेंज में थी उसी के साथ वन बाउंस ओवर द बाउंड्री रोप्स। चौका आता हुआ, काफी देर बाद आता हुआ ये शॉट। जैसी गेंद थी तेज तरार गेंद, पैरों पर की हुई गेंद, और इसके साथ एक बढ़िया शॉट 4 रनों के लिए। काफी देर बाद एक बाउंड्री देखने को मिली और काफी आशा भी करेंगे यही खरेम की टीम के सपोर्टर्स की बाउंड्री आए, स्कोर बोर्ड थोड़ा जल्दी से आगे बढ़े। एक बार फिर से काफी ऑफ स्टंप के काफी बाहर की हुई ये गेंद सनी द्वारा। एक डाउन द लेग, एक फेवर्ड आउटसाइड द ऑफ स्टंप, दोनों तरफ गेंदबाजी करते हुए। और यहाँ पर ओवर पिच गेंद, हवा में गेंद जरूर है, खिलाड़ी नीचे आते हुए, और यहाँ पर देखना होगा और एक विकेट का पतन होता हुआ। कॉट ऑन दी बाउंड्री रोप्स और विकास पवेलियन की तरफ वापस लौटते हुए। एक बार फिर से डॉट गेंद और इसी के साथ तीसरी ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचता हुआ 14 रनों पर। 14 रन। चौदह रन 5 विकेट के नुकसान पर खरेम की टीम। इस बार हवा में उछाला है, काफी ऊपर गई है गेंद, खिलाड़ी नीचे आते हुए। बढ़िया कैच, बढ़िया कैच, बाउंड्री रोप्स पर खड़े थे, अंदर भाग कर आए और ये आसान सा दिखने वाला कैच लपका जरूर, लेकिन बेहतरीन एफर्ट फील्डर द्वारा। और एक विकेट का पतन होता हुआ, 6ठे विकेट का पतन यहाँ पर खरेम की टीम के लिए। काफी दुखद स्थिति में लग रही है टीम। जो भी आ रहा है बल्लेबाज कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लगातार विकेट का पतन होता हुआ। मोनू नए बल्लेबाज। फुलर गेंद, बेहतरीन गेंद वहां पर, और इसके साथ अच्छा खेला जरूर था लेकिन उतनी बढ़िया फील्डिंग अपने फॉलो थ्रू पर करते हुए आयुष। लो स्कोरिंग मैचेस हमने देखे हैं, पिछला मुकाबला भी वैसा ही था और ये मुकाबला भी उसी की तरफ मुड़ता हुआ। ऑन साइड पर खेलने का प्रयास, काफी ऑफ स्टंप के बाहर चले गए थे, 5 पर से खींच कर निकाला जरूर लेकिन केवल 1 रन के लिए।
हवा में गेंद एक बार फिर से उछाला जरूर है खिलाड़ी नीचे आते हुए और यहाँ पर मौका जरूर बना था, हाथ से निकलती हुई वो गेंद और केवल एक रन मिलता हुआ। काफी बढ़िया एफर्ट दिख रहा था फील्डिंग का, लेकिन एक यहाँ पर मौका उनसे छूटता हुआ। एक बार फिर से तेज तरार गेंद, आगे की हुई गेंद, बड़े शॉट्स के लिए जरूर जाना चाहते हैं लेकिन वो तो मौका नहीं मिल रहा है, एलिवेशन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि काफी डीप गेंदे। और इसी के साथ चौथे ओवर की समाप्ति, स्कोर पहुंचता हुआ 18 रन, 6 विकेट के नुकसान पर खर्रेम की टीम 18 रन्स ऑन द बोर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर्स। और एक विकेट का पतन होता हुआ, जिस तरह से आ रहे हैं बल्लेबाज, जा रहे हैं बल्लेबाज, आया राम गया राम। सात विकेट गिर चुके हैं और यहां पर 8वें विकेट का पतन होता हुआ। 2 गेंदे 2 सफलताएं होमकार के लिए और इसके साथ 8वें विकेट का पतन होता हुआ खर्रेम टीम के लिए। जिस तरह की हम बात कर रहे थे कि बल्लेबाज आ रहे हैं, जा रहे हैं, लाजवाब गेंदबाजी, दबाव बना के रखा है और उसी के तहत जो भी बल्लेबाज आ रहा है बड़े शॉट के लिए जा रहा है और अपने विकेट खो दे रहा है। एक लो स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिलता हुआ, जो भी टीम जीतेगी क्वार्टर फाइनल की ओर बढ़ेगी। जी नए बल्लेबाज ऋषि ऑन स्ट्राइक ऑन हैट्रिक। अच्छी गेंद ओमकार द्वारा, हैट्रिक गेंद जरूर थी लेकिन डॉट गेंद, कोई मौका नहीं दे रहे यहाँ पर करीम की टीम को। काफी देर से हमने बाउंड्री भी नहीं देखी है। इस बार संपर्क जरूर बढ़िया है लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद और देखना होगा क्या इशारा होता है। और बेहतरीन एफर्ट, ब्रिलियंट एफर्ट, एक पार्टनरशिप एफर्ट कहते हैं जिसे हम फील्डिंग में देखते हैं, हमने देखा भी है आईपीएल में, लेकिन यहाँ पर इसी मैदान पर दर्शाते हुए दोनों ही खिलाड़ी। थैंक यू सो मच जी। अंतिम विकेट रमेश है नए बल्लेबाज और वहां पर 1 रन के लिए जाना चाहते थे और इसी के तहत ऑल आउट। 18 रनों पर ऑल आउट होती हुई खर्रेम की टीम
और इसी के साथ 19 रनों की आवश्यकता, केवल 19 रनों की आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए सुल्ला की टीम को। डीजे $18 runs required. In fact, 19 required. 18 is the score. Lowest total of the tournament registered by Team Karem. 18 all out. A few days back, Panjim Gymkhana 56 all out. Outside edge. He denies a run. He knows if he can stay at the crease, the match might get over in this over itself. Good change of pace. Very good change of pace here. Vikas just slowing things down. Oh, big chance here. And taken size already parts. Now the win has been delayed again. So runs yet to be scored. Good shot by Jayan Satodkar. Might be a run out. I think he's run out. No wicket, no run and 2 wickets down.
Big appeal and brushing the biceps. This is the umpire. Very good over. Triple wicket maiden. In fact, double wicket maiden. Rohit Halankar to bowl the second over. None for two. Oh, sensible batting. Looking for the second. And throw goes to the wicket keeper's hand. Poor throw. They become a couple. 2 for 2. Shuffling and will be a boundary here. Requesting the captain of Dharbandura, team kindly come close to the dugout. Team Dharbandura. Plays over the cover. Two should be the run. And they hold on. Just a single. Score moves on to 7. 11 required. Looking for a single. Two picked up. 2 more runs taken. Score 12. So 6 required. Played on the onside, a single picked up.
No ball. And direct hit missed. Good backing up. 3 more runs have been added. Darbandura, Team Darbandura. Team Dharbandura, kindly come close to the dugout. Nasir Beig dugout and Dinesh Naik dugout. Team Darbandura, please don't delay. Mid off coming ahead, but dropping short of him. Picks up a single. Not too required. Team Dharbandura. That's it. A win here for Karem as they enter the quarterfinals. Thank you, DJ. दोन्ही कॅप्टन मॅच टॉसा घ्या. दोन्ही कॅप्टन मॅच टॉसा घ्या. लास्ट मॅच द क्वार्टर फायनल मॅच. दोन्ही कॅप्टन मातशे टाइम काडू नाका प्लीज. खंयचे एकाडेमीक मागीर काळखान घेवची पडटली. ह्या मॅचीचो मॅन ऑफ द मॅच ओमकार. Thank you, DJ.
यहाँ पर डॉट बॉल के साथ शुरुआत करते हुए सुरला की टीम एक बार फिर से संकेत है बॉलिंग मार्क पर और उनके सामने है धारबांदोरा की टीम। एक बार फिर से हटकर खेलने का प्रयास था, शफल करके खेलने का प्रयास और एक डॉट गेंद। दो अच्छी गेंदें, लगातार अच्छी गेंदें। इस बार संपर्क जरूर हुआ है और गेंद जाती हुई सीमा रेखा पर 6 रनों के लिए पहला छक्का सा आता हुआ साहिल के बल्ले से। बेहतरीन शॉट। लाजवाब शॉट। जिस तरह से गेंदबाजी हो रही थी हमने देखा है संकेत को पिछले मुकाबले में भी लगातार अच्छी गेंदें, लेकिन साहिल के भी इरादे स्पष्ट करते हुए कि जाना चाहेंगे, एक अच्छा टारगेट, अच्छा स्कोर खड़ा करना चाहेंगे और उसी की शुरुआत करते हुए एक बार फिर से बेहतरीन शॉट। तेज तरार गेंद थी, पैरों पर की हुई गेंद। थैंक यू डीजे। दो अच्छी गेंदें, उसके बाद दो बढ़िया शॉट साहिल के बल्ले से आते हुए। और इस बार वाह, लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए आगे की हुई गेंद जरूर थी, खेल दिया है उसे 6 रनों के लिए। दूसरा छक्का आता हुआ इस ओवर का। बढ़िया बल्लेबाजी, लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए साहिल। इस बार फुल टॉस गेंद जरूर थी, नो बॉल का इशारा उसके लेग एम्पायर द्वारा। दूसरे रन के लिए जाना जरूर चाहते थे, लेकिन उतने चुस्त व दुरुस्त खिलाड़ी। नो बॉल। यहां पर और एक मौका बनता हुआ, फ्री हिट का इशारा और स्ट्राइक पर रहेंगे विजय। हमने देखा है पिछले मुकाबले में भी जिस तरह से विजय ने पारी खेली थी, काबिलियत रखते हैं बड़े शॉट्स खेलने की और अच्छी शुरुआत होती हुई हमने देखा। 2 मुकाबले लो स्कोरिंग जरूर रहे थे, लेकिन ये मुकाबला हाई स्कोरिंग होने की पूरी उम्मीद और उसी की शुरुआत भी कर चुके। आगे की हुई गेंद, क्या लाजवाब शॉट। पावर देखिए इस खिलाड़ी की, गेंद जाती हुई। तीसरा छक्का आता हुआ इस ओवर का और इस आर विजय के बल्ले से आता हुआ ये छक्का और इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर होता हुआ 24 रन। पहली ओवर की क्या बढ़िया शुरुआत रही है। पहले ओवर में 24 रन आते हुए साइज लोग स्ट्राइक पर। साइज जोर आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। 24 रन पहले ओवर से आते हुए, 24 रन ऑन द बोर्ड और व्हाइट बॉल के साथ शुरुआत करते हुए इस दूसरे ओवर की। साहिल स्ट्राइक पर। फुल टॉस गेंद एक बार फिर से और गेंद जाती हुई, लेकिन बढ़िया एफर्ट, बेहतरीन एफर्ट देखने को मिला है वहां पर स्क्वायर लेग के फील्डर द्वारा निश्चित ही। और एक बार फिर से नो बॉल का इशारा
काफी ऊंची जरूर थी गेंद, फुल टॉस गेंद चेस्ट हाइट। विजय को और एक मौका, फ्री हिट डिलीवरी, साइश गेंदबाज। धीमी गति की गेंद, लेग कटर। यही तब्दीली करनी होगी, यही करना होगा। मिश्रण यहाँ पर काफी जरूरी हर एक गेंदबाज के लिए, क्योंकि बढ़िया विकेट भी है विकेट के लिए और उतनी बड़ी बाउंड्रीज भी नहीं है। हटकल खेलने का प्रयास, एक बार फिर से शफल जरूर हुए थे, अक्रॉस खेलने का प्रयास था, लेकिन चूके डॉट गेंद। अच्छी 2 गेंदें देखने को मिलती हुई साइज द्वारा। इस बार एक्स्ट्रा बाउंस, लेकिन काफी बाहर की हुई गेंद, वाइड बॉल। वाइड बॉल। हमने अच्छी गेंदबाजी देखी थी सुरला की टीम की ओर से, दोनों ही मुकाबले बेहतरीन रहे थे उनके द्वारा, लेकिन इस मुकाबले में थोड़े लाइन से चुके हैं दोनों ही गेंदबाज। पहले संकेत साइश, वैसी बल्लेबाजी भी रही है साहिल और विजय की। एक बार फिर से आगे की हुई गेंद, फुलर गेंद, और यहां पर क्या बेहतरीन कैच पकड़ा गया है। हम जरूर जानना चाहेंगे फील्डर्स नेम प्लीज। बेहतरीन कैच, लॉन्ग ऑफ से भागकर ये पकड़ा हुआ कैच। विराज है फील्डर, क्या बढ़िया एफर्ट है, और इसी एफर्ट की दरकार थी। कुछ करना चाहिए था, कुछ मैजिकल चाहिए था, और वही यहां पर दर्शाते हुए और विजय पवेलियन की तरफ वापस लौटते हुए। जिस विकेट की दरकार थी वही वहां पर मिली। शिवाजी नए बल्लेबाज, और यहां पर एक बढ़िया एफर्ट, कैच के लिए जरूर गए थे, एक डाइविंग एफर्ट देखने को मिलता हुआ। एक मौका जरूर वहां पर छूटा, ड्रॉप कैच जरूर कहेंगे क्योंकि पहुंच गए थे, लेकिन क्या लाजवाब कैच था जो विराज ने पकड़ा, और उसी के तहत विराज पवेलियन की तरफ वापस लौटे। एक दमदार शॉट था। एक बार फिर से ऑफ साइड में की हुई गेंद, तेज तरार गेंद जरूर थी, लेकिन देखना होगा कहां जाती है ये गेंद। 1 बाउंस ओवर दी बाउंड्री रोप, चौका आता हुआ, और साहिल वहां पर डटे हुए अपनी टीम के लिए और अच्छे टच में नजर आते हुए। जिस तरह की गेंद थी, फुलर गेंद थी, ऑफ साइड में की हुई थी, और इसका पूरा लाभ उठाया। वहां पर जानते थे कि कोई वहां पर मौजूद नहीं था। अभी यहां पर इस बार धीमी गति की गेंद, रन के लिए गए हैं और आसानी के साथ रन पूरा करेंगे। लेग बाइज का इशारा एम्पायर द्वारा, और इसके तहत दूसरी ओवर की समाप्ति होती हुई 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचता हुआ 34 रनों पर, 34 रन, 1 विकेट के नुकसान पर धारबंदुरा की टीम नीचे। डीजे फुल टॉस गेंद के साथ शुरुआत जरूर की है। तेज तरह रन के लिए जा रहे हैं, दूसरे रन की दरकार रहेगी। वहां पर मिस फील्ड होता हुआ, लेकिन अच्छा कवर अप, और इसके तहत बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट्स, 2 रन प्राप्त करते हुए पहली गेंद पर
जानते हैं धारबांदोरा की टीम सनी गेंदबाजी का मोर्चा संभाले हुए तीसरा ओवर लेकर। धीमी गति की गेंद थी, एक लूफी डिलीवरी जरूर थी, अच्छी तरीके से खेला वहां पर अलोंग द कार्पेट सिंगल के लिए। साहिल अच्छे टच में नजर आते हुए, अच्छी टाइमिंग उनकी गेंद उनके बल्ले से निकल कर आती हुई। इस बार तेज तर्रार गेंद जरूर थी, एक बार फिर से ऑन साइड में खेली गई गेंद और एक सिंगल। और 38 रनों पर स्कोर आगे बढ़ता हुआ सिंगल के तहत। फुल टॉस गेंद और एक की तरफ गेंद जाती हुई, काफी लंबा छक्का। बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए साहिल अपनी टीम के लिए। और इस बार रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास जरूर था, चूंकि बेहतरीन शॉट्स उनके बल्ले से देखने को मिली है, ताकत भी रखते हैं और ऑन साइड को ज्यादातर फेवर करते हैं। एक बार फिर से लॉन्ग द कारपेट, गैप में जरूर थी लेकिन उतनी बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा डीप में। और 3 ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचता हुआ 45 रनों पर 45 रन्स विद द लॉस ऑफ 1 विकेट। धारबंदरा टीम और यहां पर एक फुल टॉस गेंद पर अपनी विकेट दे बैठे। बड़े शॉट के लिए गए थे लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद था, उतनी बढ़िया टाइमिंग नहीं, सीधे फील्डर के हाथों में खेल बैठे और ये बड़ा झटका लगता हुआ धारबांदोरा की टीम को। बेहतरीन यहां पर बल्लेबाजी का मुजाहरा, एक अच्छी नॉक, अच्छी इनिंग अपनी टीम के लिए खेल गए हैं साहिल। रमेश नए बल्लेबाज जरूर आए हैं और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे, सिंगल के साथ अपना खाता जरूर खोला है और स्ट्राइक पर रहेंगे शिवाजी। चाहेंगे कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी चलती रहे क्योंकि जिस तरह की शुरुआत साहिल ने दी है, एक बढ़िया शुरुआत, एक अच्छी इनिंग्स और ताबड़तोड़ शॉट उनके बल्ले से देखने को मिले। बेहतरीन गेंद लेकिन नो बॉल का इशारा एम्पायर द्वारा, नो बॉल, ओवर स्टेपिंग, नो बॉल और वही दर्शाते हुए सो फ्री हिट की डिलीवरी रहेगी, एक मौका बनता हुआ और एक मौका जरूर रहेगा और इस बार स्ट्राइक पर रहेंगे शिवाजी। अच्छी गेंद, फुल लेंथ की गेंद, अच्छी गेंदबाजी करते हुए आयुष
एक विकेट जिसकी दरकार थी, एक बड़ा विकेट चटकने में सफल रहे हैं इस ओवर में। और उसी के तहत अच्छी गेंदबाजी, आगे की हुई गेंदें, फुलर लेंथ की गेंदें लगातार देखने को मिलती हुई इस ओवर में। एक बार फिर से वही गेंद और भारी किनारा और एक विकेट का पतन होता हुआ शिवाजी चल बैठे हैं पवेलियन की तरफ। Batter's name please, batter's name. मयूर है, स्ट्राइक पर रहेंगे मयूर। अच्छी गेंद, एक बार फिर से लिप कटर गेंद। मयूर नए बल्लेबाज, क्या लाजवाब कमबैक एक तरह से कहेंगे सुरला टीम का, क्योंकि बेहतरीन गेंदबाजी रही है आयुष द्वारा। विकेट भी चटके हैं और डॉट गेंदे भी लगातार। शॉर्ट गेंद लेग साइड में जरूर खेला है खिलाड़ी वहां पर मौजूद, और केवल एक रन मिलता हुआ। और इसके तहत चौथी ओवर की समाप्ति, 4 ओवर के बाद स्कोर पहुंचता हुआ 47 रनों पर 47 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर्स। डीजे डीजे और गेंदबाजी करने के लिए आए हैं ओमकार। अंतिम ओवर इस पारी का 47 रन, 47 रन ऑन द बोर्ड। स्ट्राइक पर रहेंगे मयूर। अच्छी गेंद फुल लेंथ से शुरुआत करते हुए अराउंड द विकेट, दूसरे रन के लिए जाना चाहते हैं वहां पर, और रन आउट। मिस कम्युनिकेशन नजर आती हुई मैदान पर, जाना चाहते थे दूसरे रन के लिए लेकिन नकारा, और मयूर रन आउट होते हुए। प्लीज हरी अप, बेटर नेक्स्ट बैटर प्लीज, मस्ट बिगिन विथ सो। Batter's name please. Better name, better please. गणराज on strike. रमेश द्वारा बेहतरीन शॉट जरूर है, दोनों खिलाड़ियों के बीच में जाती हुई गेंद, दूसरे रन के लिए जाएंगे। बढ़िया थ्रो जरूर, लेकिन 2 रन काफी आसानी के साथ। एक बढ़िया फील्डिंग एफर्ट डीप से नजर आता हुआ, और 50 अप, 50 बनते हुए एक अच्छा एफर्ट धारबांदोरा टीम का। ओमकार एक बार फिर से तैयार गेंद लेकर। गुड लेंथ की गेंद जरूर थी, दूसरे रन के लिए जाना जरूर चाहेंगे, लेकिन बढ़िया थ्रो और गेम छिटकती हुई वहां पर ओमकार के हाथ से। बढ़िया एफर्ट जरूर था लेकिन पकड़ नहीं पाए। उसी के तहत 2 रन और 2 रन जुड़ते हुए स्कोरबोर्ड पर, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 52 रनों पर 52 रन ऑन द बोर्ड। इस बार रिवर्स शॉट खेली है, लाजवाब कनेक्शन जरूर, गेंद जाती हुई और बढ़ती हुई सीमा रेखा पार। मच नीडेड बाउंड्री फॉर धारबांदोरा टीम। बढ़िया शॉट थी, एक स्वीट हिट जिस तरह से हम कहते हैं।
रिवर्स शॉट काफी आसानी के साथ वहां पर लेकिन बढ़िया संपर्क, सभी खिलाड़ी अंदर जरूर थे। और इस बार डीप पॉइंट, डीप बैकवर्ड पॉइंट का खिलाड़ी वहां पर बाउंड्री रो पर जाता हुआ उसी शॉट के लिए। बढ़िया गेंद, एक डॉट गेंद, गुड लेंथ की गेंद, पूरा लेंथ के लिए रुके थे लगता है, लेकिन जिस तरह की गेंद पड़कर बाहर निकली। बेहतरीन गेंद, ब्लॉक होल में की हुई गेंद, दूसरे रन की दरकार रहेगी, दूसरे रन के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन बेहतरीन थ्रो और इसी के तहत रन आउट दूसरे रन के लिए जाते वक्त। So score is 57 runs on the board, 58 is the target. आम्ही सेमीफायनलीचो ड्रॉ काडटा, ज्यो 4 टिमी सेमीक पावल्या, शेल्डेम, ऑस्नोडा, सावेवेरेम आणि ह्या टिमीचे विनर्स, सो आम्ही हांगा ड्रॉ काडटा। हांव मागता मुसेब हेणें आमकां पयलो एक लॉट काडून दिवचो, मुसेबान आमकां पयलो लॉट काडून दिवचो आनी तेज्या वांगडा जो लॉट येतलो जी पयले 2 येतले लॉट ती पयली सेमीफायनल खेळटली। सो मुजेब आमकां पयले 2 लॉट काडून दितलो। सो पयलो लॉट, Hello, cameraman, focus on stage please. टीम शेल्डेम, जी पयली टीम सेमीफायनलीक पावली, टीम शेल्डेम। सेकंड लॉट, सो पयली सेमीफायनल जातली शेल्डेम वर्सीस सावेवेरेम। शेल्डेम वर्सीस सावेवेरेम जातली पयली मॅच आणि दुसरी मॅच जातली ऑस्नोडा वर्सीस विनर्स ऑफ दिस मॅच। थँक यू। लॉट्स दाखोया ऑस्नोडा आणि ह्या मॅचीचे विनर सेकंड सेमीफायनल आसतली। सुरला वर्सेस दारबांदोड़ा विनर। Let's come back to this match. This is the 4th quarterfinal of this tournament, of this 4th session. This is the 2nd day of this tournament, and tomorrow we will be having the big matches, 2 semi-finals and the finals, the grand finale of this tournament, organized by Autotech boss Panjim in the loving memory of Dinesh sir and Nasir Beig bhai. So 58 is the target, 58 runs to win this match in 30 deliveries. Bowler's name please. Gandraj to bowl the first over. On strike Sai Zore. And non striker then Akshay. Target of 58 to win. A very good score. .59 is the target. 58 runs have been scored. Dot ball to begin the innings. Oh, the ball is up in the air. They are appealing, but it's not out. So 2 dot balls.
Big shot attempted, and it's a boundary. So finally they break free. Couple of dot balls and a boundary. Oh, lovely. Good execution here. And one bounce into the fence. Consecutive boundaries after consecutive dot deliveries. Suare. He is looking to open up now. 8 runs of the last 2 deliveries. They might look to change the field position. Might place a field for that switch hit. Taken on the full, but cannot find the gap. Straight to the field to mark the end of the over. Score 12. Bowler's name. Bowler's name. Ramesh bowling the second over. 12 of the first over. The floodlights also have come on. Mistime shot. Ball stood up in the air and should be a catch. Taken. No ball is the call. So they pick up 2 runs. (14). Inside edge and picks up a single. That brings Akshay on strike. Score moves on to 15. Shot pulled and pulled in the gap. Should pick up at least a couple. Good running. Might be an overthrow run. Running too far. (17 runs). Chasing a target of 58. 59. 17 on the scorecard. 42 required.
Wide being called. It's a no ball rather than the wide. And the next delivery to follow will be a free hit. Full toss. Mistimed. Should look for a two. Coming back for the second. And the batter makes it. No, he doesn't make it. Good quick work by the Trasgaus. Score moves on to 19. Oh, played very fine, but they have fielder in position. Just a single here. That single takes the score on to 20. This is the second over. Now Saiz gets a strike. 2 deliveries remaining. He will look to hit a 6 or a 4 and then single of the last ball. Well bowled, very well bowled. A dot delivery. Now the last ball of the over. Certainly he might look to play a big shot here, because it might make a big difference with a single. Might get the strike, but the strike required run rate will be climbing up. Smart bowling by the bowler. He still goes for a single. 2 is the call, surprisingly. Score 22. 3 overs remaining now. Twenty-two. 22, so 37 required.
18 balls 32 is the equation. Bowler pulled and straight into the hands of the fielder. So it's not only a dot ball, but Sai Zore is at the non-striker's end. Oh, good shot. Sangam bowling the over and will be a boundary. Very well timed. So pressure released of Sai Zore with that boundary. Score moves on to 26. A wicket and a boundary. Very good cricketing shot. No cross-batted shot being attempted. The light is fading down. But still the teams cooperating and helping us to finish the last quarterfinal match on time. Taken on the full drives again. Should look for a couple here. Oh, he has sent Sai Zore back. Good throw. Very good throw. Score 27, 32 required. But the number of deliveries remaining are running out. 15 balls, 32. 12.5 runs per over. Sai Zore. What is the field position? They have deep mid wicket. They have deep backward square leg. And they have the fielder for that switch hit. So that 3 strong positions have been plucked here by the bowling team. Gets away. What a delivery. It's a dot ball. They know Sai Zore is under pressure to score 6s or boundary. And they are not giving him that delivery to free his arms. They have all 3 players blocking this strength on the fence. Another dot delivery. This is pressure. This is pressure when you're chasing a big total. With 1 dot ball, the required run rate climbing up by a big amount. Last ball, will he look for a single? He might look for a big shot because boundary came from the other end in this over. Oh, good shot. And in the gap. It has gone. 1 bounce into the fence. Pressure released. I think it is 31 runs on the scorecard. 28 required in 12 balls. 12 balls, 28. 14 runs per over is the equation. Sahil to bowl the penalty mid over. The fate of the run chase will depend on this over. How many runs can they produce from this over? Start off with a low full toss. And it has been belted away for a 6. Good start to the over. Low full toss.
enough to get underneath the delivery. Size ball ila size ore ball paula sa. Oh, after 6 dot ball, this is what you don't need to afford. Cannot afford dot deliveries. Misham shot and landing safely. He'll pick up a single. So Sai's back on strike. First 3 deliveries, 7 runs. Inside edge and dot ball. Second dot ball of the over. Oh, good looking shot. Has he got enough bat? Yes, he has. Big 6 under pressure. Good shot here by Sai Zore after the dot ball. Only few batters can do that when they have faced a dot delivery. They have the caliber to hit the next ball for a 6. Swing and a miss, dot ball, and no dot ball. They pick up a single. In form of by an important single because he will be on strike. Good thinking here by Sai Zore. 45, 15 required. 54, in fact, 14 required. 14 required from the last 6 deliveries. 6 balls, 14 runs is the equation. Sai Zore on strike. Final over, Mayur on the bowling mark. Sai Zore on strike. Can they get 14 of the final over, or will Darbandura defend 14 and clash against Asnoda tomorrow in the second semi-finals? Semi-finals will be played of 6 overs each at 10 a.m. the first match, first semi-final. Oh, change of pace, starts off with a dot. 5 balls, 14. Good start to the over. The first semi-final between Shiolim and Suare will start at 10 a.m. Will be played of 6 overs. Shot hooked. The F fielder in that position, and he has taken
Now big problem. Saish has departed. Now 4 balls 14. Oh, single, as they have the right bat on strike now. Can he hit those 2 sixes? 3 balls 13. The sun is settling down, and so are the hopes for team Surla. 3 balls 13. 2 compulsory big shots from the 3 deliveries. Hasn't got enough. The fielder is underneath and he holds on. Now 2 balls 13. Now see the happiness on the face of Darbandura. They are just 2 balls away from the semi-finals. And that is the summary. They are almost done packing. So final ball of the quarter-final, number 4. Required. So it's Dharbandura who enters the semi-final, the 4th semi-finalist. Hard-fought innings by Sai Zore, but couldn't take the team across the winning line. Good fielding as well by Darbandura. So first semi-final between Shiolim and Suare at 10 a.m. will be played of 6 overs. Requesting Sai Zore to collect his player of the match. Sai Zore and Omkar also to collect his player of the match. You can see the draw. The first match, Shiolim versus Suare, first semi-final. You can see it live. And again, the second semi-final between Asnoda and Darbandura. Semi-finals of 6 overs. And the final in the evening at 4 p.m.
साईज जोरे आणि ओमकार तुमचे मॅन ऑफ द मॅच घ्या आणि या मॅचीचो मॅन ऑफ द मॅच साहिल. Requesting Pujan Naik of Samrat Trophies to give away the player of the match.